you will start our class. So I welcome today's session. Today I think is the fourth session. So Pratap Kishore Mohanty is our academic counselor. So I do feel you are enjoying sir's class. Sir is teaching research methodology. So I feel very informative his session. And dear learners, if you have any doubts, any problem, any suggestion, any improvement, because this is a new to us also. Due to this pandemic, everybody is staying in the home, so it's not possible to conduct class online. Not possible to offline class in the study center. So it's difficult to reach in the study center. So what is Google Meet? You can reach to all students, and the IGNOU objectives to reaching to unreached or reaching to the doorstep of the students, because you are not telling to the students they should come to us. Our slogan, IGNOU will go and join to the students. So that's why it's called People's University. So I do feel this online counseling, this online platform will enhance our knowledge, enhance our skill. So I do request to all the students, because there is few number of students in joining the class. So what are the problem? Assignment, examination, regarding subject, whatever you have problem. So you can put forth your question. So sir is there. So now I request to Pratap sir. He will start continuing his session. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Dear friends, good morning. I hope we must be enjoying the last 3 classes, and our discussion must be a learning experience for to you all. Let us start today's class. We'll start today's class on types of research. We'll start today's class on types of research. As you know, from the very beginning, we have already studied research refers to a systematic study of one's chosen subject for arriving at both new and valid conclusions. आमे सब बेले कहूचे जे आमे जेतबे रिसर्च करूचे सेटा गोटे सिस्टमैटिक स्टडी जोटा कि निजे चूज करिथिबा निजे बाछिथिबा गोटे विषय वस्तु उपरे अध्ययन करिबा एवं गोटे नूतन एवं आगरू करा जायथिबा अध्ययन उपरे बलिष्ठ अध्ययन प्रक्रिया करी गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत रे उपनीत होबा होची गवेषणा तथा रिसर्च बोली आम इंग्राजी रे कहूचे. Study of one's chosen subject for arriving at both new and valid conclusions. For that, in sociology, we claim to engage in scientific research of social phenomena. जेहेतु आमे समाजर सामाजिक व्यवस्था सामाजिक विधि व्यवस्था सोशल फैक्ट सोशल रियलिटी एवं अन्य विषय वस्तु गुड़ी को अध्ययन करूँ तेणुकर वी एंगेज आवरसेल्स इन साइंटिफिक रिसर्च ऑफ सोशल फेनोमेना सामाजिक विषय वस्तु गुड़ी गोटे वैज्ञानिक सम्मत वैज्ञानिक अनुशीलन करने आम चेष्टा करूँ सोशल साइंस रे. तेणुकर आम जो मूलर जमी कहली रिसर्च रेफर्स टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ one's chosen subject. Scientific research engages in a search into one's chosen subject. जे जड़े विचार करुवा किंबा निजे ग्रहण करिथिबा निजे बाछिथिबा विषय वस्तु उपरे अध्ययन करिबा एवं आशा करा जाए जे से जो विषय वस्तुर अध्ययन रु जो सिद्धांत रे से उपनीत हेले that will enrich the existing knowledge or body of knowledge. से विषय वस्तु किंबा से निर्दिष्ट विषय उपरे आगरू करा जाइथिबा विभिन्न गवेषणा गुड़िक एवं गवेषणार सिद्धांत को पुणी आउरी बलिष्ठ करिबो बोली आशा करी ए साइंटिफिक रिसर्च टी करा जाए
निजर गोटे निर्दिष्ट बाछिथिबा विषय वस्तु उपरे एवं सबुठु बड़ कथा हमें कहूछु जे दैट conclusions or the study output will enrich the existing body of knowledge. आपण माने बुझंतु कि existing body of knowledge कोन एवं ताकू केमिति enrich करूची. आमे जेमति सोशल इवोल्यूशन कथा कहउतले सबु बेले जेमिति सोसाइटी रे इवोल्यूशन माध्यम रे सामाजिक विकास परवर्ती पूर्व पर्याय परवर्ती पर्याय मध्य रे गोटे विकसित पर्याय आड़ को जाउचे सेमति अध्ययन रे बॉडी ऑफ नॉलेज रे नॉलेज बिल्डिंग प्रोसेस रे ज्ञानर जो विकास करने क्षेत्र में जेकोसी समाज विभिन्न दिगर एपर्यंत करा जाइथिबा गवेषणा अनुଯାयी जो पर्यंत अध्ययन करा जाइथिबा जो पर्यंत आमे से विषय वस्तु गुडी को बुझीचे ताठू आहुरी बलिष्ठ भाव रे से विषय वस्तु गुडी को बुझिबार प्रक्रिया रे सहाय्य करे साइंटिफिक रिसर्च. वुड यू फॉलो मी? देन जदि आमे वंस चूजन सब्जेक्ट कथा बारंबार कहूचे ताले व्हाट इज वंस चूजन सब्जेक्ट एंड हाउ टू चूज इट गोटे बड़ चैलेंज हबा कथा. जदि गोटे विषय वस्तु ऊपर गवेषणा करिवार कथा उठुची ताले से गवेषणा करिवार निर्दिष्ट जो संदर्भटी आमे चूज करिवा कथा पड़िची ताले ताकू व्हाट इज दैट से केमिति चूज करिवो एंड हाउ टू चूज इट. तेणुक तार किछि आमे जदि पैरामीटर्स देखुचे जे कौन कौन आमे क्वेश्चन करवा दरकार जे जतबे गोटे निर्दिष्ट गवेषणात्मक निबंध पाई मु आगु को जाउची आई एम गोइंग टू हैव अंडरटेक ए रिसर्च इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ माय इंटरेस्ट. सो व्हाट वुड बी माय what would be the parameters that I would look for before coming to the conclusion that I would undertake study on XYZ subject. So the first question I or you, we all researchers should need to ask ourselves before undertaking or before venturing into a new area of research. गोटे निर्दिष्ट नूतन गवेषणात्मक विषय वस्तु को ग्रहण कला पूर्व आम मान गोटे निर्दिष्ट प्रश्न निजक पचार दरकार जे डज दिस सब्जेक्ट ऑफ माय रिसर्च रियली इंटरेस्टिंग टू मी, इज इट इनसाइटिंग एनी इंटरेस्ट विद इन मी. जो विषय वस्तुटी नहीं कि आपण माने जो विषय वस्तुटी को स्टडी कि अध्ययन करने नवा जाउछंती डज दिस सब्जेक्ट ऑफ योर रिसर्च making an interesting appeal to you. Would you follow me? ये से विषय वस्तुटा आपण मान को अपील करूची इंटरेस्ट अपेक्षा जदि आपण अपील रु बुझी परियो आउट कि इट इज अपीलिंग टू, इज इट अपीलिंग टू यू टू अंडरटेक ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एवं जदि आपण गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु ऊपर अध्ययन करिया चाहउचंदी गवेषणा करिया चाहउचंदी आपण सामने 10टा विषय वस्तु अछि एवं आपण गोटे विषय वस्तु को नउचंदी ता पछर रेशनैलिटी कोन कोन पई नउचंदी, how it is appealing to you. ये गोटे बड़ा प्रश्न है. तापरे is it possible to carry out a scientific inquiry on the topic of your research? मु जो विषय वस्तुटी को नेली ता पछरे तो आमे कहली मोर मते इंटरेस्ट अछि अपील करूची तार विभिन्न कारण को परवर्ती समय रे पुणी आमे खोजिबा जे why it is appealing to you, why not the other one. तार माने आपण कहले कोन विषय वस्तु आपन बेसी इंटरेस्टिंग करई छी सी अलग कथा ताकू पुनी विस्तार भाव रे आलोचना करबा. बट सेकंड इज द स्मॉल क्वेश्चन आई नीड टू आस्क माय सेल्फ और एवरी रिसर्चर टू आस्क देमसेल्व्स, इज इट पॉसिबल टू कैरी आउट ए साइंटिफिक इंक्वायरी ऑन द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च. मु जो निर्दिष्ट विषय वस्तु ग्रहण करूची इज इट पॉसिबल अपेक्षा जदि आरो क्वेश्चन हम पछरे फिजिबल, इज इट फिजिबल बिफोर मी. बुझी परले फिजिबिलिटी आउट के बेटर आपण माने बुझी परिबे जे मो पक्षरे ए प्रकार विषय वस्तु को सामाजिक व्यवस्था को विषय वस्तु को गोटे साइंटिफिक इंक्वायरी करिबा पछरे करिबा पाई मो पाखरे यथेष्ट कोन कह जिवो, इज इट पॉसिबल और मु एटा करी मो द्वारा संभव कि यह संभव कि इज इट फिजिबल यह प्रैक्टिकली पॉसिबल कि नहीं. फॉलो मी पॉसिबल अपेक्षा आपण आउट की तादेर जोड़ंतु इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कैरी आउट सच ए स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हिच हैव क्रिएटेड इंटरेस्ट इन मी.
प्रथम दुईटा आपण बुझिले आम विस्तार भाव आलोचना करिया प्रथम जीवा थर्ड को जे कोनोसी रिसर्च आम करछे स्टडी करछे आम समस्त जानिछे each and every kind of study and research needs some resources. That resources might not be financial resources alone, but there are other kind of resources you need to complete your research. आम जमती कहूँ आम परवर्ती समय पूरा देखा जे डाटा कलेक्शन करी प्राइमरी सोर्स आनी सेकेंडरी सोर्स आनी मु किसी टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करी किसी लोकों को भेटी लाइब्रेरीज को जीवी तापई पूर्व कौन होइछि आमे बॉडी ऑफ लिटरेचर को मु अध्ययन करी रिव्यू ऑफ लिटरेचर कथा पढ गुडाई जिंस अछि तार बैकड्रॉप रे हम अपन जहा काम करबा दरकार पूर्व मन को रिसर्च डिजाइन टी तैयारी करी हम रिसर्च डिजाइन ऊपर डिटेल पूरा पढिबा ए आज Do you have enough resources to start and complete your research? आरंभ करी शेष पर्यंत गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत रे पहुंचला पर्यंत मु मोर स्टडी किंबा गवेषणा को सठिक रूपायन करि परिबि कि नै आरंभ रु शेष पर्यंत एवं सेति पई जो रिसोर्सेस दरकार जो मटेरियल रिसोर्सेस दरकार जो प्रकार रो आवश्यक मटेरियल मो पाखरे दरकार मटेरियल मे बी material in the form of money or material in the form of availability of methodology, availability of other resources like access to library, access to textbook, to suppose RTI materials. आजकल RTI रे मुझे डाटा मागी कि गवेषणा जो माने करछन ताको मध्ये अध्ययन करी ता ऊपर गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत रे पहुंचुंदी तो विभिन्न प्रकार रो जो रिसोर्सेस मोर गवेषणा पई दरकार मो स्टडी पई दरकार अध्ययन पई दरकार पूर्वरु हमको एंश्योर करबा को पड़िबो जे डू वी हैव दोज रिसोर्सेस एट आवर डिस्पोजल हम पाखरे से रिसोर्सेस अवेलेबल अछि तो एवं जदी अछि को स्तर रे अछि जहा मते एंश्योर करोछि जे मु स्टार्ट करबी एवं से प्रकार रो गवेषणा को मु कंप्लीट करबी विदिन ए डेफिनेट टाइम पीरियड मु गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु नेला परे ताकू आरंभ रु गोटे फाइनल सिद्धांत रे उपनीत हला पर्यंत जो रिसोर्सेस दरकार मो पाखरे ताहा अवेलेबल अछि कि नाही आई मस्ट एंश्योर माय सेल्फ या परे आमे जो गुडा को मु कहूची ता ऊपर विशेष भाव रे मु फोकस करिबे एबे खाली टिके टिके चुंबक रे कहया चेष्टा करूची आर यू लाइकली टू फेस एनी एथिकल और मोरल प्रॉब्लम्स ए जो गवेषणा कला बेले किबा अध्ययन कला बेले मु ए जो विषय वस्तु टुके नैची मु ताकू नै कि किछि एथिकल एंड मोरल प्रॉब्लम रे पड़ी पारे कि एथिकल एंड मोरल किछि इश्यूज अछि कि फ्रॉम माय साइड और फ्रॉम द लार्जर सोसाइटी फ्रॉम द लार्जर यूनिवर्स मु जो यूनिवर्स नैची जो प्रकार एरिया नैची जो प्रकार विषय वस्तु नैची विल दैट क्रिएट एनी एथिकल और मोरल प्रॉब्लम्स और विल इट इन्फ्लुएंस और will it be a problematic study for me from ethical and moral point of view? Suppose you need to understand what is ethical and moral problems. कौन create है करे? आमे जतबले types of research को आज जिबा types of research देखिबा विभिन्न प्रकार विषय वस्तु टाइप्स ऑफ रिसर्च रे केमिति कोन करा जाउची कोन ग्रहण करा जाउची तथा मु गोटे छोटिया चुंबक रे आपण मानको कहबा के चाहूची सपोज आमे गोटे somebody is interested to undertake a study on the sexual behavior of women or adolescent girl. Who would be the ideal person to undertake that kind of research? You ask yourself, who would be the ideal person to undertake such kind of research? I think you will agree with me that a lady, a woman researcher would be more comfortable in taking this kind of research, and simultaneously, when the interviewee and interviewer both are ladies, both are women, they will feel comfortable in interacting with each other. So there are number of regions, number of issues where there are ethical and moral issues concerning the subject of research and the methodology that we are undertaking during a research. So who is going to ask questions?
And apart from that, there would be another example. Suppose you are undertaking a study on particular religious behavior of a particular group. The kind of questionnaire or the kind of interview schedule that I have prepared should be prepared keeping in mind the kind of attachment of a particular group to whom I am going to interview, and their attachment towards the kind of religion, their kind of religion. More than निर्दिष्ट धर्मर गोटे निर्दिष्ट प्रकार विषय वस्तु पर आलोचना करिया चाहूची एवं सेठी जेतोळे म आलोचना करिया चाहूची मे बी I may like or dislike, or my personal preferences and likes and dislikes might be there on particular issues. But when I am framing questions, when I am preparing interview schedule, I must be careful enough to think, to see, ensure that I am not putting forth some of the questions, or my interaction with the group should be in such a manner that there would not erupt any ethical or moral problems during my research. Would you follow me? And last but not least, I must ensure that is the subject of my research theoretically significant and interesting. What is theoretically significant and interesting? Theory building katha ame koche. Amo purboru, there are many theories. There are many well appreciated theories on social evolution. There are theories like functionalism and all that. So when I am going to carry out a particular research, will that study or the study outcome gote nirdishta prakarର theory ର perspective ରୁ significant ki nai, interesting ki nai, au existing body of knowledge, body of theory re ye kichi add karuchi ki, will it going to add value to the existing theories or not? I need to ensure these kind of questions. So before undertaking any kind of research on one's own chosen subject, we need to ask ourselves as to, and that will also enrich me in the sense that my chosen subject is going to answer all these questions. Jodi ethiru konasi gote ro uttar dei paruni mo chosen subject, that might be interesting to you, but it is not going to add value to the existing body of knowledge. mo kotha bujhi pale to mo pakhare resources achi, more interest achi, but if it is not adding up to the existing body of knowledge, tahale modhya mo study ta sete fruitful habo nahi, because I am not contributing anything significant to the body of knowledge at jo existing body of knowledge ko jodi mo study kichi contribute hi karu nahi at the end, then my whole labor is only a loss of time and energy. So before undertaking any kind of study of scientific study of social phenomena, any researcher, you and me, must ensure the minimum understanding or minimum contribution of my chosen subject towards the body of knowledge that I need to ensure. Theoretical understanding कौन आपण मान को सेतबे लागिवो जे बॉडी ऑफ नॉलेज जो थियोरी ऑफ theoretical understanding को केमिति कंट्रीब्यूट कर आमे मूलर मु कहू छी जे थियोरी टा कोन व्हाट इज थियोरी आमे फर्स्ट क्लास रे बुझ पढितले जे थियोरी इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फैक्ट्स देयर आर सोशल फैक्ट्स आमे से दिन कथा होतले मंदिर को चप्पल पिंदी की जीवा न जीवा कथारु आपण माने टिके मन रखितबे जदी एंड एई भलिया जे बहुत गुडे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फैक्ट्स एवं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फैक्ट्स वेरीफाइड फैक्ट्स से गुडा रिसर्चर एवं से थ्रू रिसर्चर जते बेले से वेरीफाइड फैक्ट्स को देखे कि कंस्ट्रक्ट्स एन एब्स्ट्रैक्शन एवं दैट कंस्ट्रक्शन गुटे
कॉन्सेप्चुअल फ्रेम ऑफ माइंड तैयारी करे गोटे फ्रेम करे एवं सेही प्रकार रो सोशल फैक्ट एवं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एब्स्ट्रक्शन को नहीं करी गोटे कंप्लीट अपन मान करो थियोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयारी हुए गोटे थियोरेटिकल आमे कहू अंडरस्टैंडिंग तैयारी हुए एवं आमे आम रिसर्च रे बारंबार कहूचे जे कोनसी आमे रिसर्च करछे एही प्रकार रो पूर्वरु दिया जाइथिबा थियोरीज को आइदर आमे निगेट करिवा our research can very well question the existing body of knowledge and existing theories, or else at least it will add to the existing theoretical understanding. मोर कहवा कथा आमे केते बेला कहू नै जे existing theories are self sufficient, they can never be questioned, they can always be questioned. The existing body of knowledge or the theories existing today can well be questioned, but we have to build such a theory around it, such a counter around it, that people and researchers will follow that, or else you will propose another kind of theoretical understanding in your study. Would you follow? तो आमे कहू नै जे existing theoretical understanding जहाँ society रे अछि on various dimensions of social fact and social issues सबु बेले आमे ताकू फॉलो करिचे से कथा नुह आमे we need to understand the existing body of knowledge or theories आमे जो स्टडी करिया जाउचे ताकू पूर्वरु कोन को थियोरीज भितर को से आसुची को थियोरीज को बेस करके चलीची एवं आमे जदी से थियोरीज को काउंटर करिया चेष्टा करचे आवर होल एक्शन होल रिसर्च मस्ट रिफ्लेक्ट दैट स्टार्टिंग फ्रॉम आपन रिसर्च डिजाइन सब से प्रकार तयारी करा जायथिबा दरकार से प्रकार रो रिसोर्सेस से दिया जायथिबा कथा एवं परवर्ती समय आमे जत निगेट करी के दुआ कथा कहूचे वी मस्ट बी थरो एनफ वी मस्ट एंश्योर दैट वी आर गोइंग टू काउंटर विथ XYZ logic. At least you can understand, you are going to understand what is theoretical understanding. एवं जेतेबेला हम रिसर्च करूचे आमे कहूचे what are the purpose of research? आमे मूलरु कहूचे सेही कथा को आमे पूर्वरु कहउतले जे different purposes of research. To extend the body of knowledge. Extend को जदि न करबा expand कहबा, to expand the body of knowledge. गोटे निर्दिष्ट आजिकल विषय वस्तु देखु आम से दिन कथबार्ता होते इवन इन लाइक नेचुरल साइंस लाइक प्योर साइंस मेडिकल साइंस जंती मेडिकल साइंस रे अपन माने आमे ए 20-30 वर्ष भितर न्यू एंड सब डिविजन्स आमे देखुचे बहुत पिन पॉइंटेड डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज बिल्डिंग देखुचे आमे हार्ट कथा कहूचे हार्ट भितर आमे विभिन्न प्रकार कार्डियोलॉजी देखुचे पल्मोनरी डिजीज भितर विभिन्न टाइपोलॉजी आमे देखुचे सेही बलिया सोशल साइंस रे मध्ये आमे देखुचे एक्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज केते डिपार्टमेंटलाइज कंपार्टमेंटलाइज हेइ गलानी तेणु करी आमे जो निर्दिष्ट कंपार्टमेंट डिपार्टमेंट किबा निर्दिष्ट पर्याय गोटे सोशियोलॉजी रो गोटे निर्दिष्ट माने करंतु आपण मेडिकल सोशियोलॉजी हो सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन रो गोटे निर्दिष्ट छोट विषय वस्तु को आमे पढिबा को जाउचे अध्ययन करिया को जाउचे ताले से निर्दिष्ट विषय वस्तु उपरे एपर्यंत करा जायथिबा गवेषणा एपर्यंत ग्रहण करा जायथिबा स्टडी एवं एपर्यंत से स्टडी को भित्ति करी कि निया जायथिबा जनरलाइजेशन लाइक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कोन अछि आमे जदि आम स्टडी माध्यम रे सेही एक्जिस्टिंग थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अराउंड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक्सटेंड न करूचे एक्सपांड न करूचे ताहले there is no purpose of undertaking a research. So the existing body of knowledge को आमे enhance न करूचे ताको आउट के डाइवर्सिफाई न करूचे ताको ओडिया रे कहले बलिष्ठ न करूचे से बॉडी ऑफ नॉलेज रे हम किछ नुवा देले आमे किछ नुवा तथ्य कथा कहले आपण माने बीए रे जो माने पॉलिटिकल साइंस पढिथिबे अल्प बहुत जानिथिबे जे आमे समस्त कार्ल मार्क्स को पढुचे एवं मार्क्सिज्म कथा कहूचे पोस्ट मार्क्सिज्म कथा कहूचे आमे मध्य ए जो लास्ट सेकंड क्लास रे पढुतले जे मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म कथा कहउतले तो नुवा नुवा तथ्य नुवा नुवा तत्व थियोरीज मध्य बिल्ड होची बाय अंडरटेकिंग दिस काइंड ऑफ रिसर्चेस there are very intelligent people undertaking newer and
far refined kind of research and giving their own theoretical understanding and challenging the existing body of knowledge. तापर सेकंड जिंस होची टू पुट लाइट ऑन हिडन फैक्ट्स और मिस्ट्रीज गोटे पर्पज होची रिसर्च रो जदि किछि इफ देयर आर सम हिडन फैक्ट्स देयर आर मिस्ट्रीज व्हिच द ह्यूमन माइंड हैव नॉट येट बीन एबल टू कॉम्प्रिहेंड ह्यूमन माइंड भितरे पर्यंत माइंड कुड नॉट एबल टू पुट लाइट ऑन ए पर्टिकुलर फैक्ट और मिस्ट्री बोली हमें ताको कहू ता ऊपर से मिस्ट्री को अनरावेल करबा पई मध्ये रिसर्च करा आपण माने जो माने हम माने समस्ते सुनिथिवा रिगार्डिंग बर्मुडा ट्रायंगल जो जगह जे कोनसी उडा जहाज जे कोनसी प्रकार रो शिप से जाउची निखोज हे जाउची मिलुनी तापरे आपण माने देखिबे आश्चर्य होबे गूगल ले जति मारी कि दिबे बर्मुडा ट्रायंगल रो कोन हेछि देखिबे किंतु तापरे एबे भी ह्यूमन सोसाइटी रिसर्च करूची गवेषणा कोन ने कि व्हाट इज द हिडन मिस्ट्री hidden fact behind Bermuda Triangle. So there must be the purpose of finding out the truth behind hidden facts or mysteries. So that might be a purpose of my research or your research. The hidden fact कौन है? Generalization of laws. आमे जोटा कि theory building रे किछि काम कर बुझू. हमारो purpose of research should generalize the law. जदि आमे पांचटा जगह छटा जगह in many places we could find out and could reflect that such is the nature of such or such causative factors bring this kind of logical answer. गोटे निर्दिष्ट cause और गोटे निर्दिष्ट इफेक्ट अछि बोल करी यदि various places रू various time spectrum रे हमें प्रूव करि पारुचे ताले we could formulate a generalize a law that this will bring in this. आपण जदि प्योर साइंस रे नेचुरल साइंस रे हमें कोन कहउतले जे जनरलाइजेशन ऑफ लॉस केमती होची जे एप्पल टा गछरु तळकु पडिबा सब गछरु पडुची कोनसी गछरु ऊपर को पळैबोनी गोटे परफेक्ट लैबोरेटरी कंडीशन में हमें सब बेले कहूचे जे 2 molecules of hydrogen 1 molecules of oxygen will bring in water in a perfect laboratory condition. जो perfect laboratory condition दिया जाइतिबो ए प्रकार 2 molecules of hydrogen थिबो 1 molecule of oxygen will bring in water. So एटा over a period of time this has been proved and it has become a law for natural science followers. So generalization of laws, purpose of research to generalize things. आपण को काली की परजन म कहउतली जे रिगार्डिंग मार्क्स वेबर को कथा काली कहउतली एंड यू विल कम आपण माने जते बेले रिलीजन पढिबे रिलीजन ने मध्ये मार्क्स वेबर को पढिबे मार्क्स वेबर गोटे निर्दिष्ट गवेषणा थिला जे प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जे से कहउतले वर्ल्ड रे जते प्रोटेस्टेंट कंट्रीज अछंती एवं जते प्रोटेस्टेंट काली भी भूली गली सेटा कहला बडको प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स मान को अपेक्षा प्रोटेस्टेंट माने बेसी डेवलप्ड बिकॉज तांकर वे ऑफ लाइफ तांकर व्यूज टू लार्जर वर्ल्ड व्यू इज डिफरेंट देन द कैथोलिक्स पीपल इवन इफ दे बिलोंग टू द सेम रिलीजन सेम ब्रॉडर रिलीजन भितरे मध्य दीटा सेक्ट भितरे देखा जाईची तांकर जीवन चर्या रे तांकर से जो दीटा सेक्ट भितर एमिति किछि धर्मीय छोटे छोटे भावनार डिफरेंस तारतम्य अछि जोथि पई देखा जायछि सब कैथोलिक्स कंट्री माने बहुत पुअर इन रिलेशन और इन कंपैरिजन टू दी आपनकर प्रोटेस्टेंट कंट्रीज. सो एटा जते बेले से किछि सोसाइटीज रे तांकर गवेषणा कले परवर्ती समय से कहले इट इज ट्रू टू ऑल दी societies where he propounded that it has been found truthful or found one can authoritatively say that all the Protestant countries are more developed and progressive than the Catholic countries. So generalization of laws can be made only through proper research. So our
पर्पज ऑफ रिसर्च शुड जनरलाइज लॉ जनरलाइजेशन ऑफ लॉज जदि किछि हमें देखुचे जदि फील्ड रे किछि अनुभव करूचे गोटे जगह रे नुहो किछि जगह रे हमें ताकू गोटे जनरलाइज लॉ हिसाब रे पुट कला पूर्वरु आमे गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत रे उपनीत हला पूर्वरु हम कहि परिबा जे आई हैव टेस्टेड एंड वेरीफाइड थिंग्स एंड आई हैव फाउंड इट ट्रू इन ऑल माय फील्ड लोकेशंस सब जगह रे देखली रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम रेस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी रेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स एंड रिजियन मु पाइली जे दिस लॉ इज एप्लीकेबल मु केते बेले कहबी जेते बेले आई विल अंडरटेक ए रिसर्च सो थ्रू रिसर्च laws can be generalized then आमे जेमति थियोरी बिल्डिंग रे कथा कहउतले जे अंडरस्टैंडिंग थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कथा कहउतले एग्जैक्टली सही भलिया जे एक्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज रे और अवेलेबल फैक्ट्स एंड थ्योरीज जहा अछि ताकू टेस्ट करबा ताकू वेरीफाई करबा जे एक्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज रे अमुक थ्योरीज has been propounded whether that theory is still valid in my society or in our society or in the changing circumstances whether the theories that have been propounded 80 years 100 years back is still valid in my society or not बुझी पले तबरे जो theory जो social fact existing here already अछि ताकू हमें टेस्ट करबा पे मध्ये हमें our purpose should be there to test the existing fact and theories एवं आ गोटे बड़ा पर्पस कोन इट्स अ बिग पर्पस आई वुड से फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स हमें जहा कथा कहूचे एक्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज रे जो हमें कहूचे जे किछि एनरिच करिवो हमकु गोटे आइसोलेशन लागुनी गोटे व्हेन माय स्टडी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द existing body of knowledge does not necessarily mean that it will remain in the books and textbooks only. Please follow me carefully that ame jetebele kahuche mo research ro findings would enrich the existing body of knowledge. Theory building hela mo theory ke counter kali noa theories deli. Do you think that will only be limited in a textbook or book? No. The purpose of research is to finding solution to problems. केमती solution to problem होची हमें केबे जानि छी कि सपोज गोटे निर्दिष्ट रिसर्च आउटपुट आसी छी ताको मन करो इंडिया रे हमें प्लानिंग कमिशन नीति आयोग कथा हमें कहबा for a minute you just think about planning commission renamed as नीति आयोग वर्तमान करा जाई छी आम देश में जिते प्रकार प्लानिंग होची स्टार्टिंग फ्रॉम विलेज लेवल विभिन्न वर्गर लोकों विभिन्न जियोग्राफिकल लोकों से तिब्बतियान हो से हिमालयन लोकों हो से ओडिशार आदिवासी अंचल लोकों हो जो प्रकार सब स्कीम पॉलिसीज प्रोग्राम से गुडा को सब तैयारी होची ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट on the basis of the kind of researches or the volumes of research being undertaken by various authorities on the subject semane jeota gobeshona kariki douchonti tankar output tankar suggestions से गुडा को गवर्नमेंट लेवल रे आमे कहूचे पॉलिसी रे परिवर्तन आछि नीति सरकारी नीति निर्धारण क्षेत्र रे परिवर्तन करा होछि तो जहां मु एक्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को दोचे सेतिक नुहो दैट एक्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज रे जो मु एडिशन कली कि जो मु valuable input daily through my study or through the conclusion of my conclusive part of my study that is being taken as part of solution to the problems but आदिवासी अंचल रे ए पर्यंत हेल्थ इश्यूज को नहीं एया करा जाउतला but an authority on the subject undertook a study से स्टडी कले एवं से बाहर कले जे एई प्रकार रो जाय से चुआरू पानी पीवा द्वारा जोटी से माने गाय गोरु को गाधौचंती निजे गाधौचंती से पानी को से माने एते दिन धरी पिउचंती बिकॉज ऑफ दैट एई प्रकार रो फ्लोरोसिस होची ए रोग होची से रोग होची एक कथा मने करंतु सरकार को कान रे पडला जे हमको स्टडी कुड फाइंड दैट सेमान को पे स्वतंत्र पानी रो व्यवस्था करबा दरकार सो मोर ओवरऑल कहबा दरकार जे फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम केमिति होची सोसाइटी रे थ्रू रिसर्च आपण माने गोटे कथा सुनिछबे पॉलिसी एडवोकेसी को जाय गोटे इंग्रजी रे गोटे जिंस अछि पॉलिसी एडवोकेसी
किछि जिंस अछि जोटा रिसर्च करा जाय किछि लोक किछि ऑर्गेनाइजेशन किछि इंस्टीट्यूशंस एबाने अछन्ते सेमानकर काम होछि एक्जिस्टिंग फाइंडिंग एबे जो आउटपुट स्टडी फाइंडिंग आसुची आउटपुट आसुची ताकू नै कि पॉलिसी लेवल ले केमति एडवोकेसी करिवा सेठी जाय कि केमति नीति निर्धारण क्षेत्र रे परिवर्तन आनिबा गवर्नमेंट रे प्लानिंग प्रोसेस रे केमिति ए गुडा को ए स्टडी इनपुट गुडा को पुरै करी लोकंकर प्रॉब्लम को सॉल्व करिवारे हेल्प करिवा so it is not that the mere study is going to enrich this body of knowledge only but it is helping people and communities or the larger society so the larger society is getting benefited out of your study out of your research and the solutions of the social problems they are facing over there government and other agencies are trying to ameliorate them from their social problems so you can understand the kind of topic the kind of subject you are undertaking for research may at times contribute not only to the body of knowledge but that will be helpful to ameliorate people's problem लोकंकर दैनंदिन जीवन रे समस्या रु सेमान को बंचेबा क्षेत्र रे सॉल्यूशन बाहर करबा क्षेत्र रे मध्ये आपण ग्रहण करूतबा आपण अंडरटेक करूतबा स्टडी आपण ग्रहण करूतबा विभिन्न गवेषणात्मक निबंध गुडी को आपण परवर्ती समय सहाय्य करछि तगरे हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च को जिबा वर्तमान देखिबा प्रथम होची there are many types of research hame earlier of second class re bodhe hame alochana karthile types of research according to the need of the researcher and the problem at the field ko bishay vastu ko samasya ko hame अध्ययन करिया को चाहूची मोर नीड कोन अछि व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन ताकू नै करी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च गोटे जिंस होची जे डेस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च सो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन डेस्क्रिप्टिव रिसर्च आम टिके टिके आलोचना मध्य करथिले कथावार्ता माध्यम रे गोटे जिंस होची इट्स ए फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन एमिंग प्राइमरीली टू describing the characteristics of individual situation group गोटे निर्दिष्ट सामाजिक व्यवस्था भितरे I am trying to describe the characteristics of particular group or particular situation or particular social fact as it is, as it exists at present. गोटे निर्दिष्ट ग्रुप गोटे निर्दिष्ट आदिवासी संप्रदाय होंतु गोटे निर्दिष्ट सोशल ग्रुप और कल्चरल ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप गोटे निर्दिष्ट सिचुएशन गोटे सामाजिक अवस्था आम जोटा कहे ओडिसा गोटे निर्दिष्ट सामाजिक अवस्था को गोटे निर्दिष्ट टाइम फ्रेम भितर आम अध्ययन करने को चेष्टा करूँ दैट इज व्हाट डिस्क्रिप्टिव सोशल रिसर्च इज ऑल अबाउट आम मियरली बेसी कंट्रोल न करके आम बेसी आम मियरली द सिचुएशनल एनालिसिस करूचे गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु को बुझीबा चेष्टा करूचे किंबा बुझेबा चेष्टा करूचे ये विषय वस्तुटी एमिति काहेकि सेइतिपई तळे देखाइ छै देखंतु रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स से जो सिचुएशन टा ऊपर रिसर्चर रो किछि कंट्रोल नाही कुडी फॉलो जो वेरिएबल को मु स्टडी करिया को जाउची जो अवस्था व्यवस्था को मु अध्ययन करिया को जाउची मो गवेषणा भितरे मोर से घटना ऊपर I have no control over that. I am merely reporting things as it is. Describing the state of affairs as it exists at present. Descriptive research. Descriptive ओडिया कहि परनी सॉरी हां तेणु करी researcher has no control over the variables. तेणु से कहूची report what has happened or what is happening कोन घटी जाईची एवं कौन घटुची एवं on the basis of that through your observation you just discover its cause
you are just going to discover the causes. So an example, a student of management pursue a research on customer preference about a product or service. Customer preference को जेतबेले मु स्टडी करिया को जाउची, because the person has already used that product or service. Am I going to change the product or service ro quality मु change करि परिबे ना ना मु लोक जो कस्टमर रो impression or his kind of analysis of the product and services he has received मु ताको मध्ये चेंज करि परली. तो एठी वेरिएबल ऊपर मोर किछि कंट्रोल नै. I will mere report as the customer will share things on the product to me. Would you follow me? से गोटे निर्दिष्ट लॉक साबुन व्यवहार करछि, लॉक साबुन व्यवहार करि थिबारो तारो जो प्रेफरेंस काहे की करिछि, भलो लागिला कि मंद लागिला, इट इज his choice of things. मोर सेठी किछि कंट्रोल नाही. I will simply report things on the basis of the experience the particular person has gained out of his interaction with XYZ. Would you follow? Is it clear? Okay. Then which analytical research? Analytical research होची जे सी primarily concerned with testing hypothesis. प्रथम हमें एठी रहइबा. What is hypothesis? हमें समझते सेथर हमें टिके टिके आलोचना करते आज hypothesis मध्ये पढिबा. Hypothesis is that preconceived हमें गोटे आइडिया करिचे किबा हमें गोटे निजको गोटे चैलेंज दैचे that this might result this. एया कले मु भाबुचे एया हबो. मो स्टडी कला पूर्वरु मु गोटे हाइपोथेसिस नै जाइछि जे this might result this. बुझि पले तेकरी प्राइमरी कंसर्न इज टेस्टिंग हाइपोथेसिस. मु जहा ताको हाइपोथेसिस रो ओडिया कोन मु जो प्रकार रो गोटे अवधारणा मो मन भितर नैछि जे this will result this. I must test that. मो स्टडी भितर एनालिटिकल रिसर्च भितर मु नैथिबा अवधारणा को फील्ड रे with sufficient tools and technique मु प्रूफ करिबि ताको वेदर मु जो हाइपोथेसिस नैछि ता राइट और नुह. जदि अदरवाइज किछि बाहरला ताले माय हाइपोथेसिस इज रॉन्ग. तेणु करी से कते बड हबो स्पेसिफाइंग एंड इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप by analyzing the facts of or information already available. मोर हाइपोथेसिस टा मु स्पेसिफिक प्लेसेस रे जो फैक्ट और इंफॉर्मेशन अछि ताकू नै करी मु प्रूफ करिया को चेष्टा करबी जे जो प्रकार अवधारणा मु गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु पर नैछि सेटा ठीक. सपोज मु आपन मान को गोटे एग्जांपल दोछि. एठी एग्जांपल टा गोटे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर लॉन्ग टाइम्स ता अपेक्षा मु आ गोटे एग्जांपल दोछि. सपोज हमें कहबा जे following religion or religious practice किंबा to be जदि spiritual बेसी मनीष होउची ताले spiritualism रो आरो जिंस होउची at least गुटे a person who is spiritual by nature is relatively peaceful in mind than the other one. Then people having no spiritual leanings, जो मानकर स्पिरिचुअल लीनिंग अछि किंबा जो माने टिके धर्मीय भावना रे बंचिबा को चेष्टा करंती से माने मानसिक मेंटल सोलास किंबा मानसिक शांति प्रशांति पाई थांती. से माने अन्य मानक अपेक्षा बेसी मेंटल पीस रे थांती, मानसिक प्रशांति अनुभव करि थांती. एटा जदि मोर हाइपोथेसिस ताले आई मस्ट टेस्ट थिंग्स जे मु से भलिया किछि लोकन को नहीं करी आलोचना करी जो माने बहुत जोर रे religious or spiritual in nature and those who are not. It may so happen that I might come out, my study might come up saying that my hypothesis was right, or it may so happen that I might find my hypothesis wrong and the otherwise is true. So analytical research is
normally try to hypothesize things prior to the research and try to analyze things and facts information, and on the basis of that they test their hypothesis. Then there is applied and fundamental research. आमे अल्प समय आगु मु कहतली एक्शन रिसर्च अपन मान को एक्शन रिसर्च रे मु आपण मान को पॉलिसी डिसीजन कथा मध्ये कहतली एटा को आपण भलो भाबरे बुझिबे सपोज एमिति किछि रिसर्च होउची जोथरे रिसर्चर is becoming part of the researcher is becoming part of the problem. सी गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु संगे एते जोर रे जड़ित जे से मानकर समस्या को रिसर्च एवं रिसर्च रो आउटपुट भीतर सीमित रखिबा को चाहे नाही, से रिसर्च रो आउटपुट को नै करी से लार्जर पॉलिसी लेवल डिसीजन रे परिवर्तन करी से लोक मानकर से समस्या को परिवर्तन क्षेत्र रे शेष पर्यंत रहे. मु कहि पॉलिसी डिसीजन सपोज एग्रीकल्चर ऊपर आमे वर्तमान ओडिसा रे मध्ये आपण देखंतु जे मंडी रे बहुत दिन धर के रोची सरकारी एमएसपी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रे बेले बेले डिक्लेयर करा जायतिवा मिनिमम सपोर्ट प्राइस रे सरकार मंडी रो धान किणु नाहंती, यदि किणुचंती इमीडिएटली किणु नाहंती, स्टोरिंग फैसिलिटीज नाही. दीज आर सम ऑफ द इश्यूज. सो या ऊपर मु जेतबेले काम करूची मु काम करी करी थेसिस टा रखि देबा पर्यंत कथा रहउनी. सपोज मु एभळा इन्वॉल्व होईची मु सेथिक ईच स्टेज रे सही प्रकार रो गवर्नमेंट लेवल लोकन को जाय कि भेटुची एवं से गुडाकर आउटपुट जहाँ इमिडिएटली आसुची मु शेयर करूची एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज मान पाखरे सो दैट एग्रीकल्चर किंबा एग्रीकल्चर सेक्टर आज होल और जो माने फार्मर मान जो इमिडिएट समस्या को मु मोर एक्शन रिसर्च माध्यम रे ताकू सॉल्व करिया पे चेष्टा करूची. कि ना मु देखुची जे सही समस्या टा जायकरी मु रिसर्च कर देले सरुनी एप्रोप्रिएट जगह रे से प्रॉब्लम ताकू जो जहां को फाइंड आउट करिची आई मस्ट पुट ऑल दोस प्रॉब्लम्स बिफोर द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज सो दैट ए पॉलिसी डिसीजन कैन बी टेकन. बिकॉज हिंड्रेंस होची पॉलिसी डिसीजन मोर रिसर्च किछि हो नै अनलेस एंड अंटिल द पॉलिसी पीपल इन द हेम ऑफ द अफेयर्स जो माने से जगह अछती से माने जदी दे आर convinced that this is the cause of the problem, let us apply some of the government resources or let us come out with some of the government circulars, let us change the structural arrangement of mandi धान केमते नेबे केमते रखिबे केते पैसा देबे मिनिमम सपोर्ट प्राइस केमते हो या ऊपर गोटे विस्तृत गोटे चलो let us change the entire structure ताहले जाय करी हबो. तेबरी अप्लाइड रिसर्च अदरवाइज एक्शन रिसर्च बोली कहा जाए सेठिरे निजे रिसर्चर बहुत जोर रे एंगेज हुए सब्जेक्ट संगे एवं सब्जेक्ट फाइंडिंग को नहीं एप्रोप्रिएट लेवल रे रखिया पे. तेंगुरी इट इज मोर ए रिजल्ट ओरिएंटेड जते प्रॉब्लमेटिक अफेयर्स जोटा प्रॉब्लम अछि बहुत लोकंकर बहुत जगह रे से प्रॉब्लम टा सॉल्व होई परिवार बाटा अछि ताकू नै करी गवेषणा करी निर्दिष्ट जनरलाइज करी गोटे जगह रे देखैले यदि तार समस्यार समाधान हे परुछि दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च. Then fundamental research. Fundamental research रे आमे ऊपरटा कहले जे प्रैक्टिस रे केमते अप्लाई करा होछि केमते लोकंकर टू प्रॉब्लम को एथरे एनालिसिस करी करी आमे चेंज इमीडिएटली एक्शन रिसर्च करि परछि. बट फंडामेंटल रिसर्च रे प्रायतः सेटा करा जाय पारे नै. बट फंडामेंटल रिसर्च happens to feed the intellectual curiosity of the researcher. Intellectual curiosity बहुत researcher अच्छी they are curious of knowledge, curious of gaining new knowledge. Curiosity ताको भीतर अच्छी to understand theories, existing theories and propound new theories. So one existing theories रे विश्वास करंतु नहीं and they try to put forth new theories in terms of their study. So they undertake study out of intellectual curiosity. They curious, they are curious of knowledge hankering tanka bhitar gote achi. It is not necessarily problem oriented.
गोटे प्रॉब्लम अछि बोली करी जेमते एप्लाइड रिसर्च किंबा एक्शन रिसर्च एक्नॉलेज करूची तापर प्रॉब्लम रो शेष पर्यंत से गवेषणा करी से गवेषणा रो आउटपुट एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज पाखरे देखि चेंज करूची एठी सेटा हो नाही इट मियरली इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी अछि समान सेगुडा को करूछथि जेमते से एग्जांपल दउची जे रिलेटिंग टू नेचुरल फेनोमेनन रे कोन किछि होउची सेतरे नेचुरल साइंस रे केही जणे रिसर्च करिया चिंता करछि एई जिंसटा काहे कि होउची सेटा immediately not affecting you or me or the larger society at times मूल affect काहा को करू नथिबो but a person is interested to carry on research in a particular area because it is his intellectual interest because he is academically curious enough to understand the cause and root of that particular phenomena. Even in social science you might ask the sir apno natural phenomena का example दो social science social science रे मध्ये किछि जिंस अछि जहा डायरेक्टली मो लाइफ को एतेटा इफेक्ट करूनी कि कम्युनिटी लाइफ को एते इफेक्ट करू नै कि सोशल लाइफ को एते जोर इंपैक्ट एंड इन्फ्लुएंस करू नै बट somebody is interested to study that the whole universe is under scanner anybody can study anything under the sun so he is interested to study xyz so fundamental research normally takes place to enrich the body of knowledge without any intention to apply it in practice. And it may so happen that the study output that has reached to a particular stage, aji gote stage re jodi study asichi, it might help the subsequent researchers. Eta hi pare fundamental research output maybe future generation of konsi researcher kama asi pare. I'm not saying that, I'm not discarding that there is no use of fundamental research, but the thing is that you need to understand that it is because of intellectual curiosity or academic curiosity that people undertake fundamental research. Okay. Then quantitative and qualitative research apan mane samaste grown up samaste higher studies korichunti janichunti so quantitative research kon qualitative research kon quantitative research विषय में बेसी किछि कहू नै बट qualitative research रे हमें इवन अन्य डेस्क्रिप्टिव रिसर्च को मध्य क्वालिटेटिव रिसर्च रो डोमेन भीतर को बेले बेले निया जाय एनालिटिकल रिसर्च मध्य क्वालिटेटिव रिसर्च भीतर को निया जाय सो जो प्रकार रो हमें एठी माने डिपार्टमेंटलाइजेशन कंपार्टमेंटलाइजेशन करू जे बेले बेले हमें जो स्टडी नौ जे मे बी सबु नहले भी अल्प किछि टाइप्स ऑफ रिसर्च रो गोटे अमालगमेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च बेले बेले हुए किसी क्वांटिटेटिव दरकार किसी क्वालिटेटिव दरकार किसी डेस्क्रिप्टिव दरकार किसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दरकार एटा मते हुए सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज मोस्टली at finding out the quality of a particular phenomenon quality aspect to study the quality aspect of a particular social phenomena then conceptual and empirical research सेतळे जंत कोची थ्योरी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट रो तो थ्योरी ना सो एठी गोटे कथा कोची कॉन्सेप्चुअल रिसर्च नॉर्मली आमे जते आज पर्यंत कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट गुडा को संगे रिलेशन बिल्ड करिचे पढिचे देखिचे देयर आर पीपल एंड बिगर थिंकर्स philosophers who have coined various concepts and they have not built or coined concepts out of blue moon but out of vacuum ru kebe concepts mane koi naati they have experienced things they have observed things they have experienced and they have lived with kind of thing through their studies through their attachment of various aspects of society and thereafter they have conceptualized something so they have given new concepts but here for researchers like us when we are going to study things maybe we cannot coin new concepts but we can reinterpret things existing reinterpretation सुविधा we can reinterpret things गोटे concept को conceptual स्तर रे हमें मो स्टडी रे ताको conceptual clarity आनिया पे आउ किछि अधिक कर दे पारे सेम एम्पिरिकल रिसर्च कथा हमें मूल दिन पढिचे एवं एम्पिरिकल रिसर्च रे ऑब्जर्वेशन
मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बोली कि प्रथम फर्स्ट क्लास रे हमें कथबार्ता हेछि तेणुकर एम्पिरिकल रिसर्च बड़ कथा जमी एम्पिरिकल रिसर्च इज मोस्टली रिलेटेड और समहाउ गोटे नेचुरल साइंस प्योर साइंस संगे जोड़ा हला बलिया हम देखिछे एवं जोटी सेंस ऑर्गन मानकर कथा कहूचे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस कथा कहूचे एवं बहुत लिटिल रिगार्ड टू सिस्टम एंड थ्योरी बिल्डिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट या अपेक्षा बेसी ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस को गुरुत्व दिया है एम्पिरिकल रिसर्च and mostly related or more close to natural science बोल के हमें कहूचे empirical research. Experimental research. What is that experimental research? गोटे particular variable को हमें गोटे घटना घटुची गोटे निर्दिष्ट आम आगु को गले आलोचना करिया आप वेरिएबल मु दि तीन थर कहलेनी यू माइट गेट कंफ्यूज व्हाट इज वेरिएबल खाली एतिके एबे जानि थांतो आगु डिटेल पढिबा जे देयर इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल देयर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जे कोनसी गवेषणा हम करिया को जाउची आलोचना सॉरी स्टडी अध्ययन करिया को जाउचे सेठी हम पाखरे दीटा वेरिएबल अछि गोटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल गोटे डिपेंडेंट वेरिएबल से कहूची एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रे कोन करू गोटे वेरिएबल को आमे माने आमे वेरिएबल को एबे एतिक बुझंतु जे कॉज एंड इफेक्ट बोली बुझी थांतो गोटे वेरिएबल को आमे कांस्टेंट आ कंट्रोल रखी करी आ गोटे वेरिएबल को बुझिबा को समाज रे चेष्टा करै गोटे को कांस्टेंट रखिले आ गोटे डायनामिक रखिले ताको बुझिबा को चेष्टा कले दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमें ए जो कंट्रोल सॉरी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाबद रे मु जेतोले सविशेष आलोचना करबा आपण बुझी परबे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कोन देन हिस्टोरिकल रिसर्च नारू आपण माने जानुथबे कोन हेतु जे व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ ए पर्टिकुलर पास्ट रे गोटे घटनार गोटे निर्दिष्ट ट्रेंड कोन थिला आमे प्रेजेंट रे गोटे जिंस गोटे सामाजिक व्यवस्था को गोटे फॉर एग्जांपल गोटे definite part of religion or definite part of custom tradition एगुडा को बुझिया को जाउचे एवं सेते बेला हम जेतले बुझुचे हमें मियरली आजी गोटे निर्दिष्ट कांसेप्ट सॉरी निर्दिष्ट कस्टम को बुझिया को गले हमें जदि आजी व्यवस्था रे बुझिबा विदाउट लिंकिंग थिंग्स टू द पास्ट और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंटिन्यूएशन इट हैज ताहले पॉसिबली हमें बुझी परिबा कहीं ना गोटे कस्टम गोटे ट्रेडिशन ना गोटे पास्ट अच्छे विदाउट पास्ट देयर इज नो कस्टम एंड ट्रेडिशन आज जोटा मु करूची दैट कैन नॉट बी कस्टम एंड ट्रेडिशन बिकॉज इट नीड्स टू बी फॉलोड फॉर इयर्स टुगेदर कस्टम और ट्रेडिशन होगा को बहुत लॉन्ग पीरियड लागिवो तेगुरी जेतले मु कस्टम ट्रेडिशन सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स बिहेवियर एगुडा को जेतले आलोचना करिया को जिबि निर्दिष्ट भाव रे मु I must discover the trends in the past. तार origin केमती हिची, तार development केमती हिची, से phenomena टा केमती exist करिची, केमती continue होई कि आछि। ताहले जायकरी मु present day trend रे present day रे तार जो अवस्था को मु भलो भाबरे हृदयंगम करि परिबी, अध्ययन करि परिबी। Exploratory research अपन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक्सप्लोर वर्ड ता समझते हम जानि छी व्हाट इज टू एक्सप्लोर माने हमें नुआ करी किछि एक्सप्लोर करिवा को चाहू छी माने एक्सप्लोर रो ओडिया कोन हमें किछि नुआ करी काढियो को चेष्टा करू छी एक्सप्लोर करू छी गुटे वी आर स्टडीइंग ए कंप्लीटली अनफैमिलियर थिंग अनफैमिलियर प्रॉब्लम even the researcher, even you or I, who is going to undertake that research has very little or no knowledge. Tell अपन मान को अड़ुआ लगे जे जदि मु प्रॉब्लम बाबद रे जानि नै मु प्रॉब्लम केमती तैयारी करी कारण एनी काइंड ऑफ रिसर्च रो बड़ जिंस होची टू कम आउट विथ द प्रॉब्लम फास्ट कोन विषय वस्तु नबा
समस्या कौन से आरंभ हम ना एठी प्रायतः आई एम नॉट फैमिलियर विथ द प्रॉब्लम unfamiliar with the problem, little known. तेणु करी ये जगह रे आमे देखु जे जो प्रॉब्लम टा आमे बेसी भाव रे निजे देखि नै आमे सेथिरे प्रॉब्लम अछि कि नै आमे चेष्टा करू जे जानिबा पई अनफैमिलियर प्रॉब्लम को आमे प्रिसाइजली ताको फॉर्मुलेट करि पारने कोन करिबा आमे एतिकी करि परिबा जे से जगह रे आमे न्यू आइडियाज केमती अणा जाय परिबो देखिबा आमे एक्सप्लोर करू जे गोटे नुवा एरिया को नुआ डोमेन को इट मे सो हैपन दैट आम पूर्व कहीं कहीं अध्ययन करन थे परंतु इन द पास्ट प्रायर टू मी it might have happened that nobody has ventured into that area of research कहीं करना मु करिया को आरंभ करछि आपण तक प्रॉब्लम हिसाब रे देखंतु नहीं बट से पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी व्हिच हैज नॉट येट बीन टॉस्ड अपॉन और इवन इफ इट हैज बीन टॉस्ड अपॉन वेरी लिटिल सो या ऊपर आपण जेतबेले किसी अध्ययन करिया जाउछन ता ऊपर किसी लिटरेचर पाउ नांती यू आर नॉट गेटिंग एनी लिटरेचर रिच लिटरेचर किछ नाही स्टडी नाही आउटपुट नाही ता ऊपर टेक्स्ट नाही लाइब्रेरी रेफरेंस किछ नाही एंड यू आर गेटिंग नथिंग ऑफ लिटिल आउट ऑफ दैट एंड जोठी आपण गोटे गोटे जस्ट you are getting some thread of reference am see thread of reference ku dharigri apna you are trying to generate new knowledge बहुत जिनस अछि ह्यूमन सोसाइटी रे ह्यूमन सोसाइटी रो रियलिटी भितरे जो ऊपर हमें आज पर्यंत वेंचर करने तगरी एंड जहां वेंचर हे छी तार गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत रे के पहुंची नांती we are going to explore new areas, explore new domain, new domain को हमें जाउची having a very vacuum in mind हमें जाउची and sociologist and anthropologist माने कहती when somebody goes to explore things in a vacuum mind he is equally well equipped with objectivity यार भल दिग से कहते जो बहुत गुड़ा जिन मु जानी ना नुआ भाव में गोटे छोट थ्रेड रु गवेषणा आरंभ कर गोटे एक्सप्लोर करने गोटे नुआ जिनस मो मन में आसी जाऊँगी से आई माइट बी वेरी ऑब्जेक्टिव इन माय माने रिसर्च बिकॉज मु निजे मध्य से सब्जेक्ट भितर बंची नहीं मु बेसी ता ऊपर पढ़ी नहीं बेसी जानी नहीं बेसी रेफरेंस पाई नहीं बेसी लाइब्रेरी देखी नहीं रिच लिटरेचर पढ़ी नहीं मोर फैमिलियर नुह बट मु गोटे छोट थ्रेड धरिकी आलोचना पर्यालोचना करने जाऊँगी बुझा चेष्टा कर माइस माने आई एम नॉट माने वैल्यू लेडेन मु निजे गोटे बहुत जोर रे वैल्यू लेडेन ताकू नहीं मो भीतर किसी गोटे फैमिलियरिटी नहीं तेणुक माय स्टडी माइट कम वेरी ब्यूटीफुल एंड आई माइट नॉट बी वेरी सब्जेक्टिव टुवर्ड दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट एक्सप्लोर करूची मु आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स sorry just I am just taking a glass of water please conclusive research actually the term conclusive research itself is a faulty one I must tell you possibly in your book in your textbook that is not there conclusive research since we used to follow research methodology book from our time you'll find some of the research methodology books prescribed for the MA students you will find conclusive research also and there are critics of conclusive research as well conclusive research please don't take it that by way of reaching conclusion it is conclusive no कारण एटा गोटे परवर्ती समय क्रिटिक माने मध्य क्रिटिक करछन तनकर विशेष कंक्लूसिव रिसर्च ना निया जाय नहीं खाली फॉर योर रेफरेंस जस्ट ए रेफरेंस रिमार्क मु कहूची कंक्लूसिव रिसर्च इज नॉट रिसर्च ए कंक्लूसिव वन फ्रॉम द कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू जे जहां पढ़ा कंक्लूजन नै निया गला दैट इज इट फाइनल सेटा नुह but more formal and structure than exploratory research
मो कथा बुझले ना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रे हमें कहू जे गोटे लिटिल और वेरी लिटिल नोन और बहुत कम जानिथिबा गोटे नूतन एरिया को हमें वेंचर करछे एटा मध्ये सेया बट एठी आहुरी टिके फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड वे रे जेबा पे चेष्टा करा जाउछि से दृष्टि रो इट इज कंक्लूसिव बट नॉट दैट जहा कंक्लूजन आसिला दैट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल नो एग्जामिनेशन इज मोर साइंटिफिक गोटे कंक्लूजन पाई ये करा जाए गोटे एसेंशियली गोटे स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी क्वांटिटेटिव रिसर्च से ग्रहण करा जाए बहुत जोर एबे जेमती आमे वर्तमान मैनेजमेंट सिस्टम रे एमआईएस कथा कहूचे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करा जाए सेतरे लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्निक टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड to analyze the outcome but on the basis of that we can say it's a more scientific and more structured exploratory research but please friends don't take it that conclusion of conclusive research is final it is like any other research more structured and more exploratory where management information system and all those specific hypotheses specific relationship between various variables are well placed माने बेसिक साइंटिफिक वे रे ग्रहण करा जाए बट द कंक्लूजन इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव कजल रिसर्च हमें मूल जेमति कहउतली जे कजल इफेक्ट कथा हमें कहउतले जे मो जेमति कहउतली जे गोटे कांस्टेंट वेरिएबल गोटे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल तकरे कजल इफेक्ट को देखा जाए इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक चेंज एक्जिस्टिंग नॉर्म पर कौन माने गोटे चेंज आसिला सोशल नॉर्म माने बुझछनी माने सोशली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को नॉर्म को आजे हमें लॉ को हमें जानि छे आपण माने बुझंतु आपण नॉर्म बोधवे बीए जो माने पढछन से माने सोशियोलॉजी रे नॉर्म भी जानि छथि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन पुलिस कोर्ट एगुडा को होची फॉर्मल गोटे कंट्रोलिंग मेकानिज्म आरटा होची रिलीजन नॉर्म कस्टम ट्रेडिशन ता भीतर नॉर्म होची नॉर्म को आपण एतिक बुझंतु जे इट इज सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर पैटर्न सोशली एक्सेप्टेड गोटे लॉ हिसाब रे आपण नै करे सोशली एक्सेप्टेड लॉ माने इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ आवर लेजिस्लेशन लॉ कोड कॉन्स्टिट्यूशन नो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म इज वेरी रेगुलेटरी इन नेचर इट इज वेरी रिजिड इन नेचर आप समस्त जानी आम घर सका संध्या पर्यंत सोशली अप्रूव्ड नॉर्म गुड़ाक माने एक्सेप्टेड प्रिंसिपल गुड़ाक आम केते फॉलो करू सो ऑल दोस थिंग्स कैन बी स्टडीड जे गोटे स्पेसिफिक चेंज आसिले एक्जिस्टिंग सोशल नॉर्म रे कोन परिवर्तन होची एई प्रकार रो स्टडी को आम कजल रिसर्च कथा कहूची आपको आपण विभिन्न एग्जांपल पाई परिबे जे गोटे कोन कॉज आम नै परिबा जे कोन चेंज आसीची गोटे एक्जिस्टिंग नॉर्म रे परिवर्तन होची can you give me an example after the completion of this class जे कोन सोशल स्पेसिफिक चेंज आसी जोटा एक्जिस्टिंग नॉर्म रे परिवर्तन करिछि जस्ट थिंक अबाउट इट डायग्नोस्टिक रिसर्च ये मोस्टली डायग्नोस्टिक से को क्लिनिकल रिसर्च व्हिच एम्स एट आइडेंटिफाइंग द कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम से कॉजल रिलेशन भलिया किंतु एथरे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस को गुरुत्व दे जाइछे ए डायग्नोस्टिक रिसर्च रे जे एग्जांपल मध्ये दउची जे सोशल साइंस रे डायग्नोस्टिक रिसर्च बहुत कम हुए बट इट इज ए मोर क्लोजर टू क्लिनिकल एंड मेडिकल रिसर्च जो जगह रे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस माने काहे के एटा कहउची जे अपन मेडिकल साइंस रे क्लिनिकल मेडिसिन मेडिकल ये रे अपन ऑकरेंसेस ऑफ डिजीजेस एगुडा को देखि करी जनरलाइज करा जाउची तो सेति पय कहैछि जे डायग्नोस्टिक रिसर्च कैन मोर बी टेकन इनटू आवर एक्सप्लोरेटरी और अपन डेस्क्रिप्टिव रिसर्च सहित समान हे परियो तनकरी वर्तमान हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च को कंप्लीट कले जते बडे हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च बुझिले से जगह हमें द बेसिक एलिमेंट्स दैट बिल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिक एलिमेंट मेथोडोलॉजी भितर हमें कोन पाउछि
concept, proposition or hypothesis और theories. Concept कौन? हम मूलर कोई हम concept कौन? Abstraction of reality is concept. And continuous abstraction of reality आउ विभिन्न दिगरे हम जेतले realities को बहुत जोरे abstract concept concept रो हमें theories को जाउचे. Last theories हम देखुचे. तेणुकरी basic element that build research methodology गोटे होची concept, second होची proposition और hypothesis. मुझे हमती कहली hypothesis कौन जे गोटे प्री मूलरू आम गोटे अवधारणा नहीं कि बंचिबा गोटे गवेषणा को जीवा पूर्व गोटे निर्दिष्ट प्रकार अवधारणा नहीं कि जाउची जे माय रिसर्च आउटपुट will be this, will probably be this, will a probable research output बोल के hypothesis को हम कहते हैं. मु गोटे धरि नै छी यार कॉज बोध होय एटा ताले मोर स्टडी will bring into this kind of conclusion. I might not get that conclusion, but I must have a hypothesis, because keeping that in mind, my entire study design will go in a very systematic direction. But the hypothesis non be what systematic year जीवन है कारण my mind will be vacuum. मु कौन करिवा को जाउची कौन सेटु पाइबा पे चेष्टा करूची सेटा मो पाखरे थिबा दरकार. तेमकरी there is a hypothesis before me and theories. हम जानि छी जे theories with research methodology रे theories रो भूमिका कोन कारण existing theories को हमें बडिष्ठ करिया चेष्टा करूची ताको चेंज ताको जो चैलेंज करिए ता पे हमें काउंटर नैरेटिव्स किछि दबा पे हम पाखरे अछि कि हम स्टडी किछि प्रपोज करूची कि हम स्टडी किछि नुवा कथा कहूची जा existing theories रे ग्रहण करा जाय नाही किबा existing theories ता भीतर को इनकॉर्पोरेट करने हमें नुवा कथा पाइचे सोसाइटी रे से कथा मध्ये हमको दबा पड़ो. तो हमें वर्तमान पर्यंत जति देखि देखि आसुचे सब बेले बोले इवन नेचुरल साइंस और सोशल साइंस रे सब बेले हमें चेंजेस डायनामिज्म देखुचे सोसाइटी रे एवं सोसाइटी जे डायनामिज्म जेतोले देखुचे बेले बेले से डायनामिज्म किबा से चेंज गुडा को एक्जिस्टिंग थियोरीज रे पूरा संपूर्ण भाव फिट इन हो नहीं. सो तेणु करी हमें नुआ नुआ थियोरीज बिल्ड हबार मध्ये हमें देखुचे गोटे पूरा ओरिएंटल थियोरीज मान गोटे पोस्ट मॉडर्निज्म पर्यंत हमें आसुचे सब बेले रिफाइनमेंट थियोरीज रे मध्ये होउचे सोसाइटी. तापर डाटा कथा हमें कथा वार्ता हबा जे व्हाट इज द रोल ऑफ डाटा इन सोशल रिसर्च. I must have prepared another slide because what is the role of data mu eti kori nahi. So being a very grown up students and you must have gone through sociology in BA class, so you must have understood the role of data. So if you don't have a data to prove things, then your study there will be no taker of your study, or there will be no taker of your conclusion. Karana, your study output must be validated through data. जदि आपन को पाखरे तथ्य नाही ताहले आपनकर गवेषणात्मक निबंधर जहाँ सिद्धांत रे आपण उपनीत हेले से सिद्धांत को ग्रहण करिवा पे लोक मिलिबे नाही किबा सिद्धांत को सहज रे ग्रहण करिवे नाही बिकॉज आपण यू आर अनेबल टू पुट फोर्थ थिंग्स थ्रू डाटा. वर्तमान सब जिंस डाटा माध्यम रे ही तथ्य माध्यम रे ही हमें आउटसाइड वर्ल्ड को गवर्नमेंट को विभिन्न एजेंसीज को हमें डाटा माध्यम रे प्रूव करिवा. इवन पीपल विल डाउट योर इंटीग्रिटी जे whether you have put in data, we are thoroughly investigated things or not. आम जानी तुम हवारे गोटे जिनस लिखि दीच आउट ऑफ ब्लू आप लिखि दी यू हैव नॉट कंसल्टेड एनीबॉडी, यू हैव नॉट कंसल्टेड ये. तेणुक से प्रकार डाटा माने तथ्य एवं तथ्य केते प्रकार हम कथावार्ता कर आप माने समस्त जानी नथिंग टू एड प्राइमरी आउ सेकेंडरी डाटा कथा हमें कहूँ आम जो तथ्य कथा कहूचे एवं प्राइमरी डाटा कथा जो हमें कहूँ प्राइमरी डाटा कौन कौन प्राइमरी डाटा को संग्रह केमती करा जिवो जोटा इमीडिएटली इट इज कलेक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ. से निजे प्राइमरी डाटा जाई कलेक्शन करिवो. प्राइमरी डाटा भितरे आपण मानकर विभिन्न प्रकार लोक से इंटरव्यू करूची, इंटरव्यू शेड्यूल नौची, क्वेश्चनर दौची,
The primary source ru data anuchi. They are our primary sources. Interview करुची गोटे निजे respondent जी तार respondent ता संग से कथा बार्ता करुची. He or the respondent himself is his primary data or primary data source. And secondary data आपण माने समस्त जानि छथि आमे लाइब्रेरी के जाउ छी different designated office रे related जो काम करछि ता पई जाय office रो data आनु छे एवं of late एबे आमे RTI right to information act रे मध्ये वर्तमान गवेषणा करथवा छात्र छात्री माने से माने तांकर RTI माध्यम रे किछि तथ्य सरकार गठ आनु छथि हैं विभिन्न प्रकार टेक्स्ट लिटरेचर देखु छथि पूर्वरु के कोन कहि छी को जगह रे कोन स्टडी हेतिला आमे जो कोछि कोन रिव्यू ऑफ लिटरेचर आमे देखुछि मीडिया रिपोर्ट्स देखुछि कोठी कोन केबे बाहरितला ए घटना संपर्कित कोन विवरणी ताकु नेकि कोन कमिशन स्थापन हेतिला कमिशन रो रिपोर्ट कोन अछि की तो ऑल दीज आर सेकेंडरी डाटा देखो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा बिना कोनोसी प्रकार रो सोशल साइंस गवेषणा रिसर्च स्टडी प्रायतः असंभव एवं ए दीटा भीतर सब बेले हमको देखिया पड़िबो जे प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन भीतर बीइंग यंग रिसर्चर्स यू मस्ट टेक नोट ऑफ थिंग्स दैट हाउ फार वी आर ऑब्जेक्टिव हाउ फार वी आर moral and ethical in collecting data ए सब जिंस ठीक अछि ओइ रे लिखाइ छी प्राइमरी डाटा कोठो आनिबो केमिति आनिबो सेकेंडरी डाटा कोठो आनिबो केमिति आनिबो बट थिंग इज दैट बीइंग ए सोशल रिसर्चर हमर गोटे सोशल रेस्पोंसिबिलिटी रहउछि वी आर अंडरटेकिंग ए रिसर्च गोटे सोशल प्रॉब्लम पई को एनालिसिस करिया पई आमे किछि लोग आमे जेमति कहले अमेलियोरेटिव रिसर्च माय स्टडी इज अमेलियोरेटिव किछि लोक किछि जंत्रणा पाउछन्ती किछि कष्ट रहछन्ती किछि सोशल प्रॉब्लम अछि मु रिसर्च करछि एवं ता रिसर्च आउटपुट ता गवर्नमेंट को देबी विभिन्न ये रे बाहरिबो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मे बी नीति आयोग मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक नोट ऑफ दैट इट विल come up with some new policies and programs for people so जदि मोर स्टडी र एते कोन कहै जिवो लॉन्ग रन इंप्लिकेशंस अछि एते दूरगामी परिणाम अछि मो अध्ययन र मोर स्टडी र ताले primary data secondary data janila pare madhya how I will become more ethical and moral in my in collection data and how I will be more objective in treating those data and how and to what extent I'm ensuring that I am not manipulating the data could you follow me ए तीनटा जिंस primary data secondary data आपण जानिले सब जिंस जानला परे मध्य मु जो एडे बड़ रेस्पोंसिबिलिटी सोशल रेस्पोंसिबिलिटी नै छी जदि से जगह रे मु ए डाटा को नै कि मैनिपुलेट करबा आरंभ करबी मु जदि डाटा आनिला बेले मु गोटे अनएथिकल इमोरल कंडक्ट किछ करूची then my objectivity will be in question and I'm not going to actually addressing the issues core issues को address करू नहीं देखो please see to it that ensure that in the long run in your future who knows you will be big researcher in future you will be dealing with big offices but please ensure that when you are dealing with data and mostly I'm talking about primary data secondary data re manipulation I don't think manipulation is possible before secondary data re विशेष करा जाय primary data re manipulation बहुत करा जाय मोर यूनिवर्स केते मोर सैंपल साइज कोन मु ताको नै कि कोन कोली I am the only person to see don't manipulate with data and try to be objective try to be moral and ethical in dealing with primary data at least रिसर्च डिजाइन हमें एते कथा सब जानला परे रिसर्च डिजाइन कोन हाउ टू गो अबाउट रिसर्च ये तो बड़े रियली ये सब जिंस जानि छी एवं आई एम गोइंग टू अंडरटेक रिसर्च ताले हाउ टू गो अबाउट रिसर्च हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर रिसर्च तेगरी द फर्स्ट स्टेज ऑफ अप्रोचिंग ए रिसर्च is preparation of a research design da mane actually mu gote research ko conduct kala purvaru actually carrying out research
पूर्व आई नीड टू हैव ए ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर थिंग मो हाथ में गोटे ब्लूप्रिंट दरकार व्हाट इज दैट ब्लूप्रिंट आम घर कला बेलू जमी गोटे बीडीए अप्रूव्ड प्लान दरकार मो पाखे गोटे प्लान अच्छी एंटायर प्लान मो पाखे एक्चुअल घर ना I haven't seen my home at all. I haven't started things, but I have got a plan. So that blueprint is research design. ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ଥବ ସେ କହୁଛି systematically prepared outline stating the manner in which you plan to carry out the research. ଘରଟା ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରିବି ଏଣ୍ଟାୟାର ଜିନିଷ ଅଛି ମୋର କୋଉଠି ବାଲକୋନି ରହୁଛି କୋଉଠି ଘର ରହୁଛି ବେଡରୁମ କୋଉଠି ରହୁଛି So entire plan गोटे केमिति जीवी ताको सेतिर पूरा अछि एंड आ गोटे जिंस कोन अछि डिफाइन्स द लिमिट एंड स्कोप ऑफ द रिसर्च मो स्टडी रो स्कोप कोन केते विस्तार मु को जिंस को मो स्टडी भीतर को ग्रहण करिया को लउछि मो स्टडी रो परिसर भुक्त किए कोन विषय वस्तु को लोक माने को अनुष्ठान को सामाजिक विषय वस्तु जो माने मो सब्जेक्ट मोर विषय वस्तु रो परिसर भीतर आछुं आरोटा हो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ माय स्टडी फ्रेंड्स मु मोर 20-25 वर्ष रो लाइफ भीतर देखि छी जे बहुत स्टडी आसुची जो थरे खूब कम ऑब्जेक्ट रिसर्चर अछंती जो माने तंकर गोटे जदी छोट स्टडी भी करूचंती गोटे पेपर लेखुचंती आर्टिकल लेखुचंती एवं if that article is based on their own study sethire madhya gote paragraph limitation upar rakhuchନ୍ତି je although I have carried out this kind of research these are my methodology this is my sample size this is my area but this is the limitation of the study they are very objective in their output it's good konosi jinsar study nahi jo tar kichi limitation nahi mu jaha karichi that is final nuho I must admit the fact that whatever I have done whether it's a PhD study continuing for around 4-5 years or a study, a small study I have carried out for around 2 months, there are always limitations. Geographical limitation, resources limitation, आपनको पाखरे जो reference material limitations, understanding limitation, जो सैंपल साइज नहीं चंते से सैंपल साइज रो बेसी नहीं तले हुए तो आपन स्टडी आउटपुट अलग आइतांत आपन नहीं पारि नांती बिकॉज़ ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट सो ऑल दीज आर लिमिटेशंस वी आर ऑलवेज कंडक्टिंग स्टडीज एंड रिसर्च अंडर लिमिटेशंस सो ए गुड रिसर्चर एन ऑनेस्ट रिसर्चर इज ही हु पुट फॉर द लिमिटेशंस आल्सो अब ये इंटरेस्टिंग रिसर्च डिजाइन रो कथा कहूची डिजाइन रो मु लिमिटेशन कोन जानि छी मो रिसर्च डिजाइन रे मु हाइलाइट करिछि जे ऑल्दो मु एई प्रकार गोटे स्टडी करिया को जाउछि बट मु फील करछि जे द स्टडी रो बोथ दिस विल बी द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी आई मे नॉट बी एबल टू कैच अप टू रिफ्लेक्ट दिस एरिया बिकॉज़ ऑफ दिस कंडीशन और बिकॉज़ ऑफ दिस एई जिंस को एई कंपोनेंट को बोथ वे मो स्टडी सफिशिएंटली देखि पारु नै आई मस्ट बी थरो एनफ टू understand that these are the scope as well as my limitation एवं आउ गोटे भलो जिंस जैसे कोची provides an opportunity to the researcher to foresee possible areas of problems in the process एई प्रोसेस रे से सेइथरे रिसर्च डिजाइन भितर गोटे कंपोनेंट रखिची जे कोन से फोरसी करूची आगु को कोन से प्रॉब्लम फेस एई प्रोसेस भितर तार स्टडी प्रोसेस भितर से डिजाइन भीतर ही रखी जे दिस माइट बी some of the approaching problems मु स्टडी कला भितर मे बी आई माइट एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कैरिंग आउट दिस स्टडी मु स्टडी कला बेलू मे पॉसिबली मीट विथ दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस तेणुकरी रिसर्च डिजाइन रो मूल जिंस या एवं एतिक जिंस अंततः back of the mind thile our research design will be a fruitful one will be an objective one से सब को आखि आगे रखी गिरी जे रिसर्च डिजाइन कोन ताको मो एथरे दबा पई चेष्टा करछि एटा आपण मान बहिर पूरा स्वतंत्र भाव रे अछि नथिंग न्यू मु जेमति कहली जे सब जिंस आरंभ होछि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कथा कहछि
So problem identification को otherwise हम कौन बुझबा to come out with a subject, to come out with a विषय वस्तु गोटे संग्रह करबा किबा विषय वस्तु गोटे बाछिबा मु कोन अध्ययन करबा को चाहूची प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तापरे प्रॉब्लम रो डेफिनेशन कोन कोन से प्रॉब्लम रिसर्च डिजाइन ता कोन मोर कोन डिटरमाइन माने डिटरमाइनिंग डाटा नीड को प्रकार रो डाटा तथ्य मोर आवश्यक करछि मो स्टडी को बेस करके मु डाटा आवश्यक करछि এবং से डाटा कोठी मिलिबो डाटा सोर्सेस मु जो डाटा आवश्यक करछि तथ्य आवश्यक करछि से तथ्य मिलिबा जगह कोठी सैंपलिंग डिजाइन सैंपलिंग माने आपण माने समस्त मैथमेटिक्स अरिथमेटिक पढि छथि जे आमे सब बेले बेले कहू जे मु 10 जन लोक अछंती मु 6 जनकर 7 जनकर मतामत नेली मे बी एटा गोटे परसेंटेज वाइज ठीक हला तेनु करी मु 7 जनकर ओपिनियन को नेकरी जनरलाइज करि परिबी जेहेतु 7 जनकर मतामत एया बहुत इन जनरल 10 जनकर मतामत एया तो सैंपलिंग इज मोर एटा नो किंतु सैंपलिंग इज मोर साइंटिफिक नेचर गिव्स ए ट्रू पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स वी आर टेकिंग हम गोटे स्टडी रे केते लोकन को केमिति हिसाब रे को वर्गर सेक्स कोन एज कोन को प्रकार रो बैकग्राउंड केमिति हमें सैंपल नेले हमें गोटे ब्लॉक रु नेकरी जाइथिबा सैंपलिंग बेसिस रे हमें कहि परिबा जे डिस्ट्रिक्ट रो पिक्चर एया डिस्ट्रिक्ट रु नेकरी तीनटा डिस्ट्रिक्ट रु नेकरी गोटे स्टेट रो पिक्चर हमें बेले बेले कहि दी परछे किंतु सी सैंपलिंग ता सेति की रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर होबा कथा एमिति सैंपलिंग मु नैची जे ताकू नेकरी नोबडी कैन क्वेश्चन मी सो माय रिसर्च even if not undertaken throughout the state and only representative तीनटा डिस्ट्रिक्ट चारटा डिस्ट्रिक्ट रे कहि करी मु स्टेट रो पिक्चर से बोली कहि दी परछि ऑन द बेसिस ऑफ ए वेरी गुड सैंपलिंग डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चनर मु केमति तयारी करछि मु कोन प्रश्न पचारछि मोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोन ताकू नै करी मु फील्ड स्टेट सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन मु फील्ड रे काहा को रखछि केमति करछि फील्ड लोकेशन कोन कोठी जाउछि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा रिपोर्टिंग केमति करबी ए प्रकार गोटे रिसर्च डिजाइन प्राय तो कम बेसी प्रत्येक प्रकार सोशल साइंस रिसर्च रे थाए ताले आरंभ होची रिसर्च प्रॉब्लम आरंभटा होची जे मु विषय वस्तु कोन नेबी सोशल रिसर्च प्रॉब्लम कोन तकरे हमें समस्त जानि छे जे इट इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम तकरे एटा को जतबले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूचे इट डिपेंड्स नॉट नेसेसरीली जे मते किए somebody else will identify problem for me but it depends on the researcher's knowledge skill interest expertise motivation creativity गोटे सब्जेक्ट जहाँ से बाछुची से सब्जेक्ट ऊपर तार नॉलेज स्किल इंटरेस्ट एक्सपर्टीज मोटिवेशन क्रिएटिविटी जहाँ अच्छी ताकू नहीं करी से तार सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी तार प्रॉब्लम एरिया से बाछुची तेणुक नॉर्मली आम जो रिसर्च कथा कहूँ इट टेंड्स टू टेक मोर टाइम 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष धरिक लोक सोशल साइंस रिसर्च कर बेले बेले कह जाए सोशल साइंस रिसर्च टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द डायनामिज्म इन द सोसाइटी इटसेल्फ जेहेतु सोसाइटी मु जो गवेषणा करुची मो गवेषणा संगे सोसाइटी रे मध्ये सामाजिक परिवर्तन होची समाजटा स्थायी नुह गोटे स्टैटिक नुह सोसाइटी इज एवर चेंजिंग इट्स ए डायनामिज्म प्रोसेस societal problem is dynamic in nature so गोटे डायनामिक सोसाइटी को आमे गोटे निर्दिष्ट स्टैंड पॉइंट रो अध्ययन करियो चेष्टा करूचे दैट इज बिकॉज आमे 10 वर्ष लागुची 5 वर्ष लागुची गोटे स्टडी करियो बिकॉज इन द मीन टाइम थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड तो एटा होची रिसर्च प्रॉब्लम रो डेफिनेशन बाय आरएस वुडवर्थ से कहते जे a situation for which we have no ready and successful response by instinct or by previous acquired habit we must find out what to do the solution can be found out only after an investigation तो नॉर्मली आमे जहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहूचे कि जो जहार रेडीमेड आंसर हम पाखरे नाही सक्सेसफुल रेस्पॉन्स से पर्यंत मिली नहीं प्रीवियसली आमे बेसी जानि ने आमे गोटे प्रॉब्लम जो जदि किसी प्रॉब्लम देखुची प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन कोन पाइबा एई प्रकार हिसाब रे हम गोटे प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करिया पे चेष्टा करछि
एवं another होची research problem is an area of concern where there is a gap in the knowledge base needed for professional practice. जोटे देखा जाय छि जे तापर बेसी गवेषणा करा जाय नै नॉलेज बॉडी ऑफ नॉलेज रे विशेष किछि मिलु नै एवं जदी बॉडी ऑफ नॉलेज रे किबा टेक्स्ट रे किछि मिलुछि हमकु सेटा सफिशिएंट लागु नै वी आर नॉट सैटिस्फाइड विथ द काइंड ऑफ proposition they have proposed or the kind of conclusion they have reached in earlier studies. We want to try fresh studies. For that we are having a problem or having a new subject. से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आहुरी केमती भांगी भांगी आपण गोटे पूरा मिनिमम जिंस को आसीबे से कथा से कहूची आइडेंटिफिकेशन रिसर्च प्रॉब्लम गोटे ब्रॉड एरिया नबो ब्रॉड एरिया रु सब एरिया को जीवो एवं जत्ते स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्रॉब्लम को आसीबो हमको सेही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिवार सुविधा हबो एवं रिसर्च किबा स्टडी करिवा पे सुविधा हबो सब बेले गोटे जत्ते कम लेवल को पळे आसीबे गोटे ब्रॉड एरिया को नेले हमर स्टडी रो आउटपुट ता सेति ब्रॉड हबो हमें we need to pinpoint our problem. So pinpointed problem जदि हमें देखेबा ताहले हमको it will be easy to carry out the research and accordingly we can get the desired conclusion or a good conclusion I would say. Interestingly, sources of research problem कौन है पारे? It is not there in your book. I have collected it from elsewhere. Please try to concentrate. जेतबे रिसर्च प्रॉब्लम आमे आइडेंटिफाई करूछु किबा आणुछु कोटु आणुछु गोटे होची पर्सनल एक्सपीरियंस कोन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च इज a good source of idea to formulate a research problem. For example, से देछि researcher observed domestic violence suffered by wives of alcoholic husbands. रिसर्चर निजे देखि चंती जे डोमेस्टिक वायलेंस जो अल्कोहलिक हस्बैंड मान करो डोमेस्टिक वायलेंस रे तंग वाइफ माने बेसी सफर करछन देखि छी दिस एक्सपीरियंस में प्रोवाइड आइडिया टू आइडेंटिफाई several research problems related to domestic violence against women. There may be so many such life experiences. ता माने ए जो पर्सनल एक्सपीरियंस हमें कहू छी कि पर्सनल एक्सपीरियंस जदि मु किछि करि छी ताकू नै करी गोटे बट इट हैज गॉट सोसाइटल इम्प्लिकेशन सोसाइटी रे प्रकार बहुत जगह रे देखा जाउ छी आई माइट formulate my research problem based on my personal experience. Mo personal व्यक्तिगत experience to नेकरी मध्य I can formulate a research problem. मु ताको नेकरी रिसर्च करिया चाहू छी. Practical experience मु practically सेटा देखि छी अंगे निभि छी. Critical appraisal of literature देखंतु. गोटे मु लिटरेचर पढि छी गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु उपरे मु से लिटरेचर रे जहा कहि छी ताकू मु फील्ड रे जाइकरी वेरीफाई टेस्ट एंड वेरीफाई करिया चाहू छी दैट माइट बी ए सोर्स ऑफ माय रिसर्च प्रॉब्लम किंबा देयर इज ए प्रीवियस रिसर्च छै छी अगरु मु ताकू बॉडी ऑफ नॉलेज को कंट्रीब्यूट करिया चाहू छी से प्रीवियस रिसर्च रे जहा से पहुंची छी सिद्धांत रे पहुंची छी से सिद्धांत रे सठिक पहुंची छी कि नै मु वेरीफाई करिया चाहू छी मु विभिन्न प्रकार टूल्स एंड टेक्निक नै कर देखिया चाहू छी जे प्रीवियस रिसर्च रे या कोइ छी व्हाट इज टू बी टू व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट सो मु गोटे रिसर्च प्रॉब्लम से बेसिस रे करछि जे प्रीवियस रिसर्च हे छी मु तापरे अगेन आई एम गोइंग टू कंडक्ट रिसर्च किमा एक्जिस्टिंग थ्योरीज कथा कहौ छी जे एक्जिस्टिंग थ्योरीज माने करंतु किछि थ्योरीज अछि सपोज हमें कहू छी जे फॉल्टी सोशलाइजेशन प्रोसेस ब्रिंग्स इन गोटे समाज रे हमें देखुचे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ओडिया रे ताकू कहै सामाजिक विघटन हमें कहू छी ओडिया रे जो माने पढुछबे सामाजिक विघटन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन गोटे फॉल्टी सोशलाइजेशन प्रोसेस गोटे भूल किंबा खराब सामाजिकीकरण प्रक्रिया द्वारा गोटे सामाजिक विघटन प्रक्रिया हवार बहुत जगह देखा जाए इट्स एक्जिस्टिंग थ्योरी को नहीं मु आई माइट टेक दिस एज ए प्रॉब्लम मु नहीं स्टडी करिया चाहिए सतरे देखिबी जे फॉल्टी सोशलाइजेशन होची एवं फॉल्टी सोशलाइजेशन इज लीडिंग टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एक्जिस्टिंग थ्योरीज को टेस्ट करिया चाहिए एवं ता बाहर इंडिपेंडेंटली सोशल इश्यूज अछि देयर आर मेनी सोशल इश्यूज
and India is the hotbed of social issues. I mean, we are an old civilization. Social issues daily basis. Society. All those social issues can be my research problem. तापर से कोच ब्रेनस्टॉर्मिंग आमे कथावार्ता हेकरी मध्य कोन प्रॉब्लम ऊपर आलोचना करी गोटे करी करा जे करियो इंट्यूशन माने कोन एग्जैक्ट नुह बट मो माइंड कहूची बोधवे दिस माइट हैपन दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इंट्यूशन मते लागुची मते जोटा लागुची ताको मु परीक्षा करिया चाहूची आई एम जस्ट फीलिंग थिंग्स लेट अस ट्राई टू हैव ए कंक्रीट स्टडी ऑन दैट इंट्यूशन ऊपर स्टडी करिया फॉकलोर कौन जे जो गीति कथा माने जनजीवन जन कथा कविता एगुड़ा फॉकलोर मध्य आमे गोटे ताको नेकरी फॉकलोरटा कहीं आदिवासी संप्रदाय पर्टिकुलर गीत ए प्रकार संगीत कहीं जीवन में आसी तार हिस्ट्री कौन तार हिस्टोरियोसिटी तार कौन सोसाइटी रे केमिति आरंभ होइतला तार उपयोगिता कौन तांको ऊपर कंट्रीब्यूशन कौन ए फॉकलोर द्वारा तांकर फॉकलोर रे से माने कौन कहया चाहउचंती इंडिकेट कौन करचंती ताको मध्ये हम प्रॉब्लम हिसाब नै एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन जते एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन आम एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन रे आमे आउ किसी नुवा तथ्य पाउची कंसल्टेशन विथ एक्सपर्ट्स हम ये तोले कहूछु जे आमे बीए किबा एमए पढुछु हमर जो माने गाइड किबा टीचर्स अछंती से माने मध्ये दे कैन बी वेरी गुड सोर्स ऑफ गाइडिंग यू टू ए न्यू रिसर्च प्रॉब्लम सो दे कैन गाइड यू आउट जस्ट लुक दिस इज द न्यू डेवलपमेंट इन दिस एरिया you can start a study on this. So your experts, your friends, your guides, your teachers can also guide you to identify a particular research problem. Choice of field sites. So it depends. एटा किछि आउ कहिबा दरकार नै फ्रेंड्स. Choice of field sites सक्सेसफुल गोटे रिसर्च करिया गले आमे कोठी करिछि तार रेलेवेंस कोन एवं हमर फील्ड साइट मध्ये सिद्धि सेही चॉइस रे गोटे हबा कथा तो चॉइस ऑफ फील्ड साइट विशेष किछि कहबार नै कंसीडरेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्स तो आमे जेतबेले गोटे रिसर्च करूचे वी नीड टू बी वेरी अवेयर of the time our resources am पाखरे कोन अछि एवं हाउ टू यूज that valuable time and resources in a very meaningful way. But a time or resource हमको जहाँ available अच्छी research करिवा पे गवेषणा करिवा पे अध्ययन करिवा पे study करिवा पे ताकि हमें how we are putting maximum use of our time and resource. While designing the research, you need to take into account that I am going to minimize the waste of time and resources so that my designing will be appropriate. केमते रियलिस्टिक होई परिबो केमते कॉस्ट इफेक्टिव होई परिबो रिसोर्सेस टा माने एडजस्ट न करि जाऊ मु ताको सफिशिएंटली यूज करे एवं इंटरेस्टिंगली लास्ट गोटे कथा से कहि आजिकली एई भले मते गवेषणा होउची जोटी एन एक्सटर्नल एजेंसी इज फंडिंग माय रिसर्च गोटे यूनिवर्सिटी किछि फेलोशिप दउची गोटे एक्सटर्नल बॉडी गोटे एनजीओ लार्जर इंटरनेशनल बॉडी मते किछि पैसा दउची टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर रिसर्च तो आई मस्ट स्टिक टू द टाइम एंड रिसोर्सेस कारण मोर डिस्पोजल ले गोटे टाइम देछि से रिसोर्सेस देछि ताको हम केते बेटर यूज करी सो कंसीडरेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्स ड्यूरिंग रिसर्च इज आल्सो इंपोर्टेंट हम से तोळ मूल कथा होतले जे लिटरेचर रिव्यू सो फ्रेंड्स हम जेमति थ्योरीज हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आइडियाज विभिन्न कथा कहूचे हम जेतेबेले गोटे प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करूचे मध्ये सेतेबेले लिटरेचर रिव्यू इज एन इंपोर्टेंट पार्ट आम लिटरेचर न पढ़िले गोटे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कला परे ताकू मेथोडोलॉजी कोन नबा पूर्व जो माने करिसंती केमिति करिसंती सेठी कोन थ्योरीज कोन कांसेप्ट लिटरेचर कोन यूज हेची कोन स्टडीज आगुरु हेची ताकू नै करी से माने कोन प्रॉब्लम चैलेंजेस कोन स्टडी कर ड्यूरिंग दैट स्टडी एनकाउंटर करिसंती so literature review will help us will guide us because the same or the relatively same studies have been conducted by many individuals many researchers prior to me and their experience their output their way of handling issues
handling moral and ethical issues, objectivity can guide me in my research. Yes, earlier we were talking about hypothesis. So, hypothesis mu yemti agaru kohutili je gote possible output eta habo boli ame kohuchi. Se kohuchi clear explanation or prediction of the expected result. So, saman kotha mu ja kohutili je prediction of expected result both way outcome more study ra eya habo. At times or many a times many of the researchers do fail in predicting things. Tangar hypothesis bhul hue. जो प्रकार इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल भीतर रिलेशन से माने मूलरू एक्सपेक्ट करि थांती किबा विजुअलाइज करि थांती एट टाइम्स थिंग्स डू नॉट गो इन दैट डायरेक्शन व्हेन यू विल मूव टू द फील्ड यू माइट गेट a completely altogether completely different picture. But thing is that so far as possible, because you are consulting books, textbook, review of literature koruchandi bhallo methodology ko ame nouche according to the need of my study, my hypothesis should come nearer to the truth. My point is that I must take such a realistic hypothesis that my study output will, even if it will not be the same, it will come nearer to the same. Would you follow me? Just say kotha koji hypothesis should be relevant to the problem being studied. Mu gote prakar ra study nahi chi mora hypothesis ta au gote hochi. Your hypothesis should be relevant to the problem, should be consistent with the existing of body theories. Existing theories re jaha kohuchandi research finding jaha kohuchi other hypothesis jaha nahi chandi mu sei pakha pakhi nouchi relatively sei pakha pakhi consistently nouchi so that I am testing my problem hypothesis. Sorry. Universe and units of study. Universe our unit of study kon mu jemti setavale kohutli जे मो यूनिवर्स टा किए मोर मो मनकर गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु गोटे आदिवासी संप्रदाय मनकर हेल्थ कि मतलब एग्रीकल्चर ए भले किछि इशू को जतो अध्ययन करिया को जाउची द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विद इन ए वेल डिफाइंड एरिया वेयर द स्टडी इज टू बी कंडक्टेड. गोटे निर्दिष्ट यूनिवर्स हो निर्दिष्ट पॉपुलेशन और निर्दिष्ट यूनिवर्स माने डोंट टेक इट द यूनिवर्स in a scientific way. यूनिवर्स माने मो पाई गोटे गवेषणा करूथुवा व्यक्ति पाई गोटे रिसर्चर पाई जो प्रकार गोटे रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्स से नेछि से पॉपुलेशन से ज्योग्राफी से गा होछि तार यूनिवर्स एवं जेते यूनिट को से तळु को आनी परिबो जेते पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी आड को से आसीबा पे चेष्टा करियो. पायलट स्टडी पायलट स्टडी को आपण जदी बुझिबे रिसर्च डिजाइन में पायलट स्टडी मध्ये गोटे पार्ट नहीं वी कैन से रिहर्सल बोली के हमें कहि परिबा गोटे ड्रामा रा जेंती ड्रामा पूर्व दिन किबा दिन दि दिन पूर्व हमें रिहर्सल करूचे जेट आई नीड टू बी एक्यूरेट मु एक्जेक्टली सेया मु सेटी प्रोड्यूस करिया पे चेष्टा करछि. पायलट स्टडी एक्जेक्टली सेया मु रिसर्च डिजाइन हला परे मु फील्ड को रियली जिबा पूर्वरु मो फील्ड मोर मेथड्स और टेक्निक्स टू मु टिके रिहर्सल करूची किछि लोकन को पाखरे एडमिनिस्टर करी की रिहर्सल करूची. आमे जेमति कहू जे मनकर कोरोना भाइरस रो ट्रीटमेंट किछि बाहरिबो ताले किछि मुसांगु किछि मनिसंगु काहा को टेस्ट करिया को मनकर 10 जन को एडमिनिस्टर करिया को दिया जाउची. वी आर गोइंग टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ दैट मेडिसिन 10टा लोकन को पाखरे कि 5टा मुसांगु पाखरे हम टेस्ट करूची. सेही बढिया एटा गोटे प्री टेस्टिंग ऑफ द रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स. आमे रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक को प्री टेस्ट करूचे बिफोर द एक्चुअल फील्ड मूवमेंट एवं सेतरे कोन हो फील्ड वर्क को प्रॉपर फ्रूटफुल करिया पई राइट वे रे क्वेश्चन सब पचारछ कि से मूवमेंट रे मध्ये हमें किछि परिवर्तन आना जे परि हम देखले जे हमें पायलट स्टडी कला बळ किछि प्रॉब्लम आसी मोर टेक्नोलॉजी रे ताले ताको हमें चेंज कर दे परिबा. सैम्पलिंग आम सैम्पलिंग कथा से हम कहूली
the sample is what a quantitative kind of things. A sample is the smaller representation of a larger whole. मुझे जमी कहते गोटे ब्लॉक नहीं आम गोटे डिस्ट्रिक्ट परिकल्पना करें ब्लॉक रु एमती रिप्रेजेंटेटिव डाटा आम नौचे जहाँ आमको रिप्रेजेंटेटिव इन द कैरेक्टर जे आम जेनरालाइज जिते करें से गुड़िक सत बोलिकी जना पड़ी कि सत बोलिकी प्रूफ करा से जो डाटा कलेक्शन भितर आम प्राइमरी सेकेंडरी डाटा प्राइमरी एवं प्राइमरी डाटा प्राय आमर से सैंपलिंग भितर आम ग्रहण करने को चेष्टा करते So sample is the smaller representation of a larger whole. Because there is limitation of the researcher to carry out study in a larger area. So by conducting research in a smaller area, smaller representative area, he or she can generalize things from the standpoint of the conclusion of the study. Data collection बाबद रे सेतबेले तो आमे कथावार्ता हेले जे प्राइमरी डाटा सर्वे माध्यम रे क्वेश्चनर माध्यम रे एगुडा माध्यम रे हमें पाइबा एवं इंटेंसिव फील्ड वर्क हमें करिबा मेथड्स सर्वे मेथड को यूज करिबा ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू केस स्टडी जीनियोलॉजी फ्रेंड्स यू मस्ट हैव नोन जीनियोलॉजी माने वंशावली जोटा हमें को आपण माने देखिथिबे जीनियोलॉजी हमें गां अरे जो माने जाई रिसर्च करंती किबा ये करंती जाकरी जेजे बापा के थिले ता तळे दीटा गार पो दीटा थिले एटा होची जीनियोलॉजी हैं एई थ्रू मध्ये हमें डाटा कलेक्शन ए भले करू सेकेंडरी डाटा तो हम जानि छी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी आरटीआई रिपोर्ट्स एंड अदर रिपोर्ट्स एवं ए सब सरला परे हमें कहूछु हमें डाटा रो एनालिसिस कथा प्राय सबले करा जाय थाए फ्रेंड्स मु पहिला बेले तुम कहउतली जे मो वेरिएबल कथा बहुत थर कहिछि एवं वेरिएबल मो पाकर किछि स्लाइड नथिला फॉर्चूनेटली एटा हमो स्लाइड नो दिस इज नॉट आवर स्लाइड ओके ठीक अछि थैंक यू हाउ गुटे स्लाइड वर्तमान जोगाड़ करिछि मु इट्स नॉट अ स्लाइड फ्रॉम माय ओन इट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय समबडी एल्स सम ऑफ माय फ्रेंड सो वेरिएबल कोन मु जे तोड़ कहउतली दि तीन थर आपन को वेरिएबल वर्ड मु यूज करछि मो भितरे तो you need to understand जे ठीक है बापा वेरिएबल कौन अपन सेति खाली बुझंतु एक वेरिएबल होची an attribute or quality that could differ in magnitude तार संख्या रे तार आकार रे वेरिएबल ता सब चेंज हे परियो हैं एट्रिब्यूट और क्वालिटी हैं एथरे बुझंतु जे आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स कारण वेरिएबल दरकार जेतबले आपण गवेषणा करिवे गोटे जिंस होची इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होची कॉज और डिपेंडेंट वेरिएबल होची इफेक्ट आपण ए दृष्टि रो आपण देखिबे जे हमें आइडेंटिफाई करबा केमति वेरिएबल मो स्टडी रो किए इंडिपेंडेंट वेरिएबल किए डिपेंडेंट वेरिएबल ताको आइडेंटिफाई करबा हाथ मन टिके आपन सुविधा हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन इट इज ए वेरिएबल हाइपोथेसाइज्ड टू कॉज और एक्सप्लेन वेरिएशन इन अनदर वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल सीए जे हाइपोथेसिस आमे ग्रहण करूचे हमर गोटे अवधारणा जे सीए आउ गोटे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करिवो सीए इन्फ्लुएंसर इन दैट ये बुझि पले मो कथा सी आउ गोटे वेरिएबल सब बेले इन्फ्लुएंस करबा एवं डिपेंडेंट वेरिएबल कौन इट इज द कंडीशन हु इज द रिसर्चर ट्राइज टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉन्सिक्वेंट सीए सेठी कौन करिवो बाबा टिके डिस्टर्ब करने सीए कौन करूजी कॉज और एक्सप्लेन वेरिएशन इन अनदर वेरिएबल एवं एठी कौन होची डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होची इट इज द कंडीशन हु इज द रिसर्चर ट्राइज टू एक्सप्लेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉन्सिक्वेंट से कॉज और ये होची कॉन्सिक्वेंट तो एतिके आपण बुझिले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोन बुझिबे थैंक यू फ्रेंड्स आई एम डन लेट अस हैव ए डिस्कशन बट डिस्टर्ब करना ठीक है ठीक है फ्रेंड्स एम आई ऑडिबल टू यू ऑल Friends,
Yes, sir, you are audible, sir. Sir, I am done, sir. Sorla, sir. So, dear friends, now the questionnaire session is open. If you have any doubt, if you have any clarification, kindly ask to sir. Any regarding anything you want us, you can ask. Hello. Hello. Go ahead, go ahead. Sir, kindly explain exploratory research. Exploratory. Yes, sir. As I was talking to you, exploratory is to have a problem which is little known or a small thread of the problem is known. आमे सब बेले कोचे गोटे आमे एमती प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करछि जो प्रॉब्लम हमको बहुत जोरे आमे एक्सपीरियंस करके देखि छे जानि छे एवं एक्सप्लोरेटरी काइंड ऑफ रिसर्च इज सच ए रिसर्च वेयर वी नो वेरी लिटिल अबाउट द प्रॉब्लम बहुत कम हमको विषय वस्तु ऊपर जणा अछि आमे by having a thread of the issue of the problem we are trying to depending upon the subject and we are trying to unravel many of its consequences. आमे गुडाए समस्या किबा सेही प्रकार प्रॉब्लम सेही सब्जेक्ट विषय रे विशेष अवधारणा हमरो नाही एवं या ऊपर विशेष किछि स्टडी करा जाय नै अर्लियर बहुत गुडे आम पाखरे रेफरेंस पॉइंट नाही टेक्स्ट नाही थियोरेटिकल फॉर्मुलेशन विशेष किछि नाही वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स. Go ahead, students. Any question? Students, please speak. You should not be silent listener. सर हाँ यस सर एटा जो पढौथिले आपण एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन ऊपर पढौथिले कि हाँ रिसर्च डिजाइन ऊपर पढौथिले सर देयर आर मेनी पार्ट्स टाइप्स ऑफ रिसर्च आगे तापरे डिजाइन रिसर्च डिजाइन ऊपर पढौथिले सर 4-5टा पार्ट थिला सर 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 टोटल पार्टटा जति कि थिला सर सेही पूरा डिस्कशन करथिला ना प्राय हमें सब टच करिचे बोल के भाबुची बाय चांस कोन सी गोटे गोटे छाडी दिबी बिकॉज़ ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम सर से हाइपोथेसिस एक्चुअली बुक हाइपोथेसिस विषय रे टी किछि कहलेनी सर. अच्छा देखो तो मु से कथा कहूची जे आमे जे कोन सी गोटे प्रॉब्लम को नै करी जते बेले स्टडी करबा कथा कहूचे सर बैकअप द माइंड मध्ये आमे जते ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ वी हैव गॉट ए स्पेसिफिक tentative kind of result or conclusion I would say backup mind ra amar gote thibo je nai possibly my study will bring in this or this cause will have this effect my study ra possible result eita hi pare mu ei prakar gote sorry mu ei prakar gote hypothesis nei ki jauchi maybe my study will bring in this result it may so happen that always my study may not bring in the same desired result but I must hypothesize things so that to give my study a more scientific rigor but a scientific rigor mo study ko daba pai I must have a hypothesis in mind to test in during my study. Sir okay sir thank you. Any more question? Sir, pilot study टा आपसे ଟିକେ ବୁଝିଥାନ୍ତି कौन कहले pilot study
Pilot पायलट study. स्टडी हाँ आमर 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 जेतेबेले सब जिंस कंप्लीट हे गेला सब जिनस आम मेथोडोलॉजी रेडी कले सब जिनस रिसर्च डिजाइन टा प्राय आम सब रेडी करदेले से गोटे जेकोसी जिनस आम टूल्स को धरिक आम फील्ड लोकेशन को जाइक इवन फॉर दैट मैटर आम गोटे शेड्यूल क्वेश्चनियर करिचे गोटे शेड्यूल इंटरव्यू शेड्यूल करिचे आम गोटे फील्ड को जाइक आम ताको टेस्ट करिया को चाहूचे बुझिपाले तो दिस इज द लास्ट पॉसिबल Okay. चांस available to me that I might correct myself if something is wrong with the method and methodology. It's a rehearsal kind of thing prior to the actual field venture. Okay, sir. सर एग्जाम रे केमती टाइप रो को टाइप रो क्वेश्चन आसीबो सर Type of question, sir, Panigre sir, ठीक कह दूं sir. नहीं, question, it is an analytical question. Okay. सर All question carries 20 marks. Okay. So this is Sir. a long type question. So question is available online also. Okay. यस सर ओके So सर what do you want to know? Exact question is an analytical question. You have to write down for the 20. I mean 20 marks means you have to write down around 500 words. Okay. सर So question is available in the online. You can go through with the question. What Okay, type of sir. question will come? It's a, I mean, predicted to that question is a tough thing. सर You can go through with 2-3 years question, then you will have an idea. ओके सर Anybody? Any question? So we'll by this, if there is no question, then we end up the session. So dear learner, tomorrow same time, then again the class will there. Mohanty sir will take your next class. So I do feel, but the number is very few. I am very sad Sir? to say that. Hello, Yeah, Sir? go ahead. Go ahead. sir, please. I do not find study material like books in online. How to find? I had given you in the WhatsApp group. Okay. All Again? PDF I will put in the WhatsApp group. And also I had sent it mail to you. You said, I mean, we sent all students email ID, whatever the with us, we had sent it that. You are in the WhatsApp group? Yes, sir. You are in the WhatsApp group, no? Yes, sir. Check it out. I had put it there. MSO-1, 2, 3, 4 PDF is there. हाँ WhatsApp रे तो प्राय अच्छी सब. सर व्हाट्सएप ग्रुप Download रे from the Sir, what? व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड करंतु. What do you tell you? I am not getting you. सर व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड करंतु मते कहउचन कहउची. And Oh, see, add हे ना ଆପଣ WhatsApp ग्रुप ରେ ନାହାନ୍ତି କି? नहीं सर. ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ନମ୍ବର ଟା ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେବି. ଓକେ. हाँ सर मु सेंड Send me कर your दे number. मेसेज सेंड Pardon? कर देछि. आपण को मेसेज सेंड कर देछि. ମୁଁ ମେସେଜ କରିଛ ନା WhatsApp କରିଛ? व्हाट्सएप रे मेसेज कर देछि आपण को. ଓକେ ଫାଇନ୍, ମୁଁ ଦେଖିଦେବି. ତମ ନାଁ କଣ? सुस्मिता साहू. ଲେଖିଛ ତ ନାଁ ଟା? हाँ ଯଦି ନାଁଟା ହଁ ଲେଖିଛ sir। ଫାଇନ୍, ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। हाँ କ୍ଲାସ sir। ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଯଦି ନାଇଁ ହଁ ନାଁଟା sir, ଲେଖିଦିଅ, କାରଣ ଏତେ WhatsApp ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ସବୁଟା ଚେକ୍ କରୁନି। ତମେ ତମ ନାଁଟା ଲେଖିଦିଅ। I will add you. Okay. After finish the class, I will add you. हाँ ओके So सर you can- प्लीज ऐड सर. Okay. सर You download from सर मते व्हाट्सएप रे टिके भी मते ऐड कर देबे सर आपन को नंबर टा प्लीज 98611 98611 54807 54807 54807 सर सर मो ना लेखि की पठै दउ जे आपन मते भी टिके ऐड कर देबे सर. तम नाँ कଣ? जितुन अधिकारी सर. विपिन अधिकारी। सर जितुन सर जितुन. Okay, fine. ओके सर. So anybody has any question then? If not, then we'll end up the session. So I do hope you will enjoy the class.
tomorrow, same time. You will join again. So if you know somebody, please kindly let your tell your friends they should join more and more number. Okay. So I do feel you will enjoy the class. So with these words, stay safe, stay home, and I thanks to Mohanty sir. It's a nice presentation because sir is taking a lot of pain out of his busy schedule. He is giving time to you. It's not that the counselor will only talk to you or will teach you. It's not a counsel. It's not a class. It's an interaction session. So if you know something, you can put forth your views to also. By these words, I conclude today's session. Thank you very much. Once again, thank you, sir. Sir, Thank thank you you. all learners. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.